praise of Lord. Thank you so much, children. That was indeed melodious, and I'm sure they did strike a chord in heaven. And the blessings have come down, and we've all been blessed with this beautiful prayer, the hymn that they delivered so melodiously. That was wonderful. Thank you so much. It seems strange to me at times, ladies and gentlemen, that a family tree is drawn from the top of the page. Instead, I suggest we should draw first the roots deeply planted in firm ground. Roots, ladies and gentlemen, in family tree are the grandparents whose love, concern and wisdom nourishes the family. Then comes the trunk and the branches. And trunk and branches of the family are very dear parents, giving support and power, strongly branching out and reaching the sky.
When roots are strong and trunk and branches are strong, then young shoots and buds, the children of the family achieve their dream and they grow. Keeping this theory in mind and this beautiful thought that I just shared here, we initiate the family unity procession. I request the founder manager, respected sir of CMS, to please come on the stage to witness the family unity procession. May we please put our hands together for our dear sir. He's also the head of the CMS family. Please put your hands together for the family unity procession. The CMS community, hand in hand. Procession is being led by the school band of the smart students of Mahanagar campus, marching with rhythmic measured steps, synchronized. Drumming the beats are the students of junior wing of Mahanagar campus. As you may see, the tree which I mentioned a little back, followed by a principal, followed by the group of parliamentarians, young minds, promising to secure justice, a force to strengthen equality. Marching smartly next are the citizens of the world. They stand only with truth, as they believe the only way to peace and justice on earth is to do the right thing, be the right person, and stand with whoever is right always and forever. Then we have these little angels walking together with smileys waving at us, in a way asking us to do something to make this world safe for them. Marching behind them are the blooming buds, the participants of the primary section, the most valuable resource, a gift from the Lord. When I see them from here, they inspire in me two sentiments, ladies and gentlemen: tenderness for what they are and respected for what they may become. Lovely sight, lovely scene, full of energy, enthusiasm. May we put our hands together. Parents, we have got a job to do here. Thank you so much. This was indeed a real pleasure to watch from this side. You can still see the energy and the enthusiasm which is still in them, and they're so happy to put up the program today. Ladies and gentlemen, now we present before you World Parliament, where the heads of various countries come together to deliberate on the relevant issues. I invite Ms. Aisha Kazi of class 4-1 to give us more details. I believe in family unity. Family is like a net. They catch you when you're falling, and they don't let you hit the ground when we're sad and upset. Our families are our saviors. Good evening, ladies and gentlemen.
nurture the practice of family values by embracing policies that value families. In today's world, when everything is losing its meaning, we need to realize the importance of family more than ever. With changing time, the definition of family has also changed. So let us discuss in the World Parliament the importance of inculcation of family values in 21st century learners. According to an old American legend, one day there was a great fire in the forest. All the animals fled in terror in all directions because it was a really violent fire. Fire! Fire! Oh, what should I do now? There's such a massive breakout of fire in the forest. I'll use my drum to spray some water. I hope it will be of some help. He started collecting water in his drum from a nearby pond and showering it at the fire to extinguish it. While he was doing so, he noticed a hummingbird pass over his head. The bird flew towards the fire. What are you up to? Are you trying to extinguish this massive breakout of fire with just a few drops of water? Of course not. I know I can't extinguish this massive fire with this little amount of water. But I have to save this forest. It has sheltered me. I am grateful for it. We both are a part of each other. Yes, I can't break out this massive fire, but I am doing my bit. At that moment, the forest spirits who were listening to the hummingbird were moved by the birdie and his devotion towards the forest. And miraculously, they sent a torrential downpour which put an end to the great fire. The elephant in the story is the World Organization, judiciaries, and the governments, which is making all possible efforts to establish peace, unity, and harmony in the world, and make it a better and more congenial place for the future generation to live. The hummingbird in the story represents each and every family who are encouraged to do their bit in preventing Earth's destruction. Yes, dear parents, we as a Montessori school believe and teach our students that if we want to attract miracles in our life, we have to make our own contributions, no matter how small or insignificant it might appear. As CMS ideology believes that as students, it is not their responsibility to save the world or to find solutions to all the problems, but it is their duty to attend to the particular corners in the universe. And as each person does that, the world sees the self. May we all do our bit. Thank you and Jai Jagat. Good evening, ladies and gentlemen. I offer a warm welcome to all who are here to witness the proceedings of the World Parliament today. The subject open for discussion is Inculcation of Family Values in 21st Century Learners. In today's world, when everything is losing its meaning, we need to realize the importance of family more than ever. While the world is becoming more modern and advanced, the meaning of family and what it stands for still remains the same. Families are better able to identify themselves based on their core values and create lives that reflect these values so that they feel fulfilled and connected to one another.
that differ slightly from other families. However, there are some fundamental core values that tend to match within most societies and cultures. Such core values are the moral and ethical principles traditionally upheld and passed on within a family, such as fidelity, honesty, faith, kindness, trust, respect, generosity, courtesy, and justice. Defining, discussing, and role modeling your own family values can help your children make good decisions and healthy choices, and specify how they should behave in various situations and solidify the bonds within your families. Yes, you're right, Speaker Sir. But in today's busy modern times, most individuals do not think about their family values until they need to reprimand or teach their children a lesson in reaction to their unpleasant conduct. Thinking about family values and imparting them to a young age might educate children on how to behave when you're not around. What you do and say has an impact on your children throughout life. I believe important family values and ethical concepts will serve as guides. In this regard, we have eminent representatives from various countries of the world to deliberate on instilling family values in children to make a stronger and more harmonious society. Member nations, I invite you to give your views and enlighten us about the unique family values in your countries and that how they have made life worthwhile and happy. Yet, in this context, keeping dilemma is whether children should be taught good old values or should they be taught values in accordance with modern circumstances. Member nation Australia, you are recognized. Thank you, Speaker Sir. I believe that we should be willing to adapt to change. You might need to alter family traditions as years go by in order to preserve their longevity. For example, in my country, Australia, decades of immigration have been combined all over the world to create a unique, multicultural society. Australian culture is founded on family unity, equality, and humor, and these values are embraced by the newcomers to Australia who continue to mold this great country. We believe in Australia that family unity brings prosperity. Most fathers in Australia play a very active role in parenting, sharing equal responsibility with their mother, and children are taught to respect themselves as individuals from a very early age. A good and strong liberal viewpoint from Member Nation Australia. Member Nation Canada seems to have something to pitch. Go ahead, Member Nation Canada. Thank you, dear Deputy Speaker. Known as the Just Society, my country, Canada's culture, is supported by its tolerance, respect, and community orientation.
Indian values of patience and tolerance are the pillars of civilized societies. Again, the question is, how to bring a family value to a child? I invite more views from this august gathering. Member Nation France, you are invited to express your views. The French people value equality, unity, style, and sophistication. Family life in France is the backbone of French culture and community life. In France, children traditionally maintain relationships with their grandparents and extended family. In doing so, there are anecdotes about their past, which is one way the French pass on family values and traditions to their children. French parenting is about praising children for saying interesting things and for speaking well. When children truly earn your praise, they will feel a true sense of accomplishment and take pride in what they learn. There is definitely a code of conduct and proper manners in French parenting that are taken seriously. Very early in life, children are taught to sit down at a table for the entire meal, not interrupt others when they are speaking, and to sit still when the occasion calls for it. You won't see children running around at restaurants. They are sitting down without screens and participating in conversation. That indeed. That indeed was a relevant revelation, Member Nation France, celebrating family traditions, not just relationships between family members. This connection is priceless and fosters positive family dynamics. It gives family members a sense of belonging. Are there any more opinions from Member Nations? Member Nation UAE, you are invited to express your views. Thank you, Speaker, sir. Every society needs to be bound together by common values so that its members know what to expect from each other. The UAE is a close-knit and family-oriented society where religious, moral, and social values play an important role in our everyday life in our country. Smart culture has not diminished the family values of faith, morality, and justice, and these values are imbibed as a part of growing up. I fully endorse your information. I would like to add that children are like wet cement. Whatever falls on it leaves an imprint, while family comes with an abundance of love and support. It may also come with a number of internal tensions and challenging histories. We have to be sensitive to this and not give up on fostering strong familial ties. Maintaining healthy boundaries is a way of taking care of your family relationship. The integrity of your family bond must be constantly considered, and the rights of individual family members must not be transgressed. Member Nation India, the floor is yours to express your views. Thank you, Madam Speaker. In the immortal words of Swami Vivekananda, education is a manifestation of the perfection already in man. The ancient text of India established universal values which are like pearls in a string in world culture, morals,
in the form of family values, reduce social problems at large like unrest, isolation, crime, and class conflict. We in India have the Vedic concept of Vasudev Kutumbakam, which means that the whole world is one family and mankind are its children. I just want to emphasize the fact that there are many Indians who are trying to inculcate good habits in their children and protecting its rich culture. This concept is being taught in Lucknow at a socially conscious school called City Montessori School. This school believes in the victory of the whole world and so teaches the motto of Jai Jagat. Indeed, very true, Nation India. Indian values have always been an inspiration for the rest of the world and have proved to be a true example of humanity. Talking about teaching good habits, we all want our children to be healthy and happy. But food, the very thing that should nourish the next generation, has become a battleground for many families. When it comes to living a long and healthy life, let's learn from the best, shall we? If you're a child born in Japan today, you are projected to enjoy both the longest life and the healthiest. Memories in Japan, what is the secret of the well-being of your children? Thank you, Speaker sir. Lifestyle and eating patterns are a big reason for the well-being of our children. Even as childhood obesity and incidences of diabetes skyrocket around the world, Japanese childhood obesity levels have historically been much lower and have in fact been declining overall in recent years. One big secret for this fact is Japan's displacement of less healthy foods and reduction of overall number of calories eaten. Wish you all a long, happy and healthy life. No doubt, research suggests that parents should lighten up about their children's eating habit. Cut out food stress and pressure and just enjoy together as a family. It is also important to teach these values to children living in multiracial communities so as to expand their horizons beyond people in their own culture. Member Nation USA, would you like to open up? Yes, thank you, Madam Speaker. Our tradition here in the United States for families is to gather on Sundays for dinner. A convivial opportunity to enjoy the stories, music, and anecdotes of family members. Often extended family members gather to share home-cooked meals and maintain the tradition of fellowship and celebrating each other. This sense of togetherness and care for the whole is something that can be fostered by a family in many ways. Part of a family values conversation can include a sense of taking care of our community. It can be done with love and humor. Absolutely true. Thank you, Memoration USA. We are at the end of our discussion now, and we have learned that families are important in transmitting beliefs, habits, and moral values. And this process is not regarded as a lack of freedom or some kind of imposition.
but as a great learning process because parents are our first teachers. The good life is not a self-centered life, they say. Helping others, passing on one's experiences, or making a difference in one's environment, which can happen on a small scale, provides people the feeling that their lives matter. The beauty of this concept is that one can make a positive difference in another person's life, regardless of age or resources. Let us all resolve that we must create resilient happiness, a sense of belonging, foster family values for the social and emotional well-being of our children. The World Parliament today is adjourned till the next session. Have a good day. They say children should listen and not heard. They say they'll understand when you're older. You're just a kid. But a kid swam for 3 hours on the open sea to save 18 lives and became an activist for refugees. A kid broke through barriers to keep migrant families together and delivered a message of hope. Let us fight with love, faith, and courage so that our families will not be destroyed. A kid was forced to kill in a brutal civil war and became a human rights activist, free other children from violence. A kid fought for girls' right to education, was shot in the head in retaliation, and won the Nobel Prize. This award is not just for me. It is for those forgotten children who want education, who want peace, who want change. And the kid spoke truth to power, inspiring a historic movement against climate change. We kids shouldn't have to do this. I wish that the adults would take their responsibility and do this instead. But since no one's doing anything, we have to. Kids are speaking up. Kids are demanding their rights. Kids are acting now for a better tomorrow. What will you do? Absolutely mesmerizing session, ladies and gentlemen. May we please put our hands together for this wonderful World Parliament. Their plea to safeguard the world, necessity to inculcate family values in children to make them stronger, then family unity, which shall result in the unity of the world. And there were so many other things, so many secrets they shared, a unanimous decision to come together. And asking the parents to join their hands together to work for them was absolutely wonderful. Such forceful ideas delivered with double force of eloquence. May we clap once more, ladies and gentlemen, children, to motivate these young stalwarts. Now, I invite a personage on stage who leads from the front, has the capacity to translate vision into reality, a person who's committed to excellence and believes in being better than the best each day, a leader who creates leaders and has given a tremendous facelift to the academic front of Mahanagar campus in a very short span of time. Yes, ladies and gentlemen, I humbly invite our respected principal, Dr. Mrs. Kalpana Tripathi, to come at the dais and welcome the gathering. Over to ma'am. Honorable Founder Manager, Dr. Jagdish Gandhi. Our director will be coming shortly. She's a great mother. She's on the way. Parents, respected grandparents, dear parents, other family members, dear staff of CMS Mahanagar and other branches, my dear little children.
It gives me immense pleasure to welcome each one of you to this Parents, Grandparents and Parents Day of CMS Mahanagar. We are having Parents Day of classes 3, 4 and 5 today. Dear parents, the first few years of a child are critical in determining how they are going to be in school and perform in life. This is the most important part of a person's life. It is very important for all-round development of the child. The early years are important because more than 1 million new neural connections are formed every second. Neural connections are formed by interaction of genes and the baby's environment around. So it is very important that we pay attention to the environment of the child. These are connections that build the brain architecture and the foundation upon which the entire learning, later learning and behavior and health of the child depends. The children need unconditional love for their all-round development. Each child has a special way of perceiving love. There are five ways children speak and perceive love. They are physical touch. You know, we have to constantly cuddle the child, make them feel, we touch them. Words of affirmation. When they do something, you tell them that yes, well done. Even if it is a small improvement, you say well done. Quality time. Gifts and acts of service. Gifts are also important. A child is happy when so many times parents come home, they bring something for children. So that is also your act of love and acts of service. In fact, it is not only children. For your spouse, for your wives, for your husband also, this kind of expression of love is important. Whatever the love language your child understands best, it needs to be expressed unconditionally. Parents can be the greatest asset in the child development. The involved parent, even if he is busy, like all of us, many of us are very busy, mothers are working, but involved parent can turn around and if he works together with the school, he can turn around a failing student. Teachers have enormous power in children's life. See, we have so many teachers, but we remember some teachers only. Why do we remember those teachers who have touched our heart as a student, as a child? So teachers and parents can make a drastic important difference in a child's life. Their power comes primarily from the value they see in a child's being, and they see a child in the light of their possibilities. Only, we tell the teachers, if a child is not good at this, he is good at that. Find what he is good at and work to improve that. Only being a topper student or excellent in bookish knowledge does not guarantee success. Our founder manager in his speeches often says that good education along with spiritual education. A topper student who has not got a spiritual education ultimately will not be happy. So why? Because you remember the famous Sanskrit sloka, Vidya dadati vinayam, vinayadyati patratam, patravat dhanma prapti, dhanat dharma tat sukham. True or complete knowledge gives discipline and humility. From discipline comes worthiness. From worthiness one gets wealth. You are worthy of wealth, you can earn wealth. Sir always says that dhan bhi kamana hai. If we don't earn, we will be parasites on others. So we need to earn, but we need to earn through proper means. And from wealth one does good deeds in life. Good deeds bring joy. So joy tab milega. Khushi tab milegi when we are doing good deeds. So we need to education followed by spiritual, followed by good deeds. Always remember that the true role of education is to make us happy. If we are not happy, education has no rule, no meaning. So virtues like temperance, justice, fairness, service, kindness, wisdom, knowledge, truth, self-reflection, they are the key components to the life of glory and excellence. Good habits are like a kind of craft which need to be pursued like we pursue mastery of any profession or skill. See, we have involuntary actions, we have voluntary actions. Voluntary actions are those actions we do consciously. What we do consciously, voluntarily becomes our reflex actions. So if your child is in a habit of telling lies or we are in a habit of telling lies, we will become
habitual, it will become a reflex action. So we have to practice the virtues. So that practice is needed. You have to give the confidence to your child that you tell me the truth, I will be on your side. Virtue is something we do or we choose. It's a daily challenge for us all the time. So will we be selfish or selfless? Should we be brave or afraid? Strong or weak? Courage or cowardice? Bliss of ignorance or new idea? Sometimes it is said, you pretend you don't know, you won't have responsibilities, but should we, which path to take? Then stay the same or grow in life. Today it has been proved brain plasticity. We first used to think that the brain, whatever we have at an elder age doesn't grow. But I would like to say brain grows till you die. And brain is plastic, but that will grow when you keep practicing doing it. So when we are constantly working, our brain grows. So that is called growth mindset of the brain. Even at the age of 90, our brain grows. If we use our brains, if we do not use it, we lose it. Follow the beaten path or make your own path. Your decisions decide your destiny. This we have to instill in a child's life constantly. We need to teach our students right from childhood, always follow the right path, however difficult it may be. Dear parents, the children have worked hard in a short time with full enthusiasm for this program. It's pleasure to be with your small kids. They are so enthusiastic, so active, so full of energy that we forget all our troubles when we see your small children. It's a pleasure to be with them. It's a great thought of our founders to make the atmosphere conducive to learning and sow the seeds of unity in our children at a very young age. We are also celebrating Family Unity Day, and we remind ourselves the role of unity in the life of the students. I thank our respected founders, our founder manager and our founder director, that grandparents and parents and all students for sparing our Sunday and motivating all of us. I thank my vice principal, in charges, teachers and other staff members of CMS and other branches for working and with full interest. They are happy to serve the children. Every person associated in a school is a teacher. I tell my bus drivers, van drivers, caretakers, everybody that inside a school gate, whoever enters is a teacher. So he has to follow a certain dictum so that children are going to learn from them. I also acknowledge, so we need to groom each member who enters the school. I also acknowledge the presence of electronic and print media and thank them for their presence. I thank President, respected Dr. Geeta Gandhi Kingdon, who with her far-sighted vision, unflinching support and constant guidance for the proper functioning of the school. I appreciate the efforts of respected Mrs. Sushmita Ghosh, Head Quality QAID, for being our friend, philosopher and guide and helping for proper smooth functioning of this program. All the arrangements were made, they are under her. Thank my vice principal. You must have seen she is doing the comparing. My JE, Mr. K.N. Pandey, JE of Mahanagar, who is doing a lot of work in uplifting the look of the branch. The JE of Gomti Nagar, Mr. Binod Kumar Singh, and the entire team of GN2 who is helping to make this program a success. Till late night they were preparing arrangements and we were on phone call. So, and thanks to all my children for excellent performance and dear parents for sparing your valuable time. Thank you and Jai Jagat. Thank you, ma'am. Light and brightness has always been equated with positivity. Lamp leads us from darkness to light. For an auspicious inauguration of the function, we have the lighting of the lamp ceremony now. I very humbly request our respected founder manager, sir. I request our respected principal, ma'am, the special guests who are seated right in the front row,
I request our dear grandparents and also the mothers of the children to please step on the stage to light the lamps of learning. Teachers, you would please escort the grandparents, mothers. I request all coordinators, in charges and teachers to please escort them to the stage so that we have lighting of the lamp. It's very important to find the light in the darkness. It's really important to find the positive things and allow the lamp of hope and belief guide us at every step. Kultar sir, can we have the song? May these all the grandparents, it's in their honor that we have this function today, and it's a lovely, lovely sight to see willingly people walking up, the mothers, grandparents coming up on the stage to enforce the support, to make us believe that they are with us at every step in all our endeavors. I request all my special guests seated right in the front row to please come up. Please light the lamp of learning, our respected founder manager, sir. At this point, I also wish the light of peace to unite this world. And as they come down, teachers, please start lining them up at the staircase. We will have a group photograph of all the grandparents right in the front, mothers thereafter, with our respected founder manager, sir. Spread far all over the world for peace and harmony. May the Lord keep this light. Once again, I request all respected grandparents, mothers, to please line up at the staircase for a beautiful photograph, for a frame that we shall have with our respected founder, manager, sir, and the principal, ma'am. I request the staff members to please help everybody line up to escort the grandparents. Peace and harmony, may the Lord keep this light always burning forever and ever. May this light
up at the staircase now. Teachers, you can take the candles. Deepika ma'am, lighted candles to be taken back. Keep this light always burning forever and ever, forever and ever, forever and ever. It seems as if the others seated on the other side are almost in an awe. So can we really clap for this wonderful group, Vidya parents? We have a job to do. Keep this light always burning forever and ever. May this light. It's a lovely frame. Grandparents right in front, as they always are in every family. They have a wealth of knowledge gained through their lifetime, and they share it with children as they grow. They influence us as we grow up, and we've seen the world change under their influence. Thank you so much, dear respected grandparents, respected mothers. It's you who's responsible, and you are making this program a great success. Not only do you support your family, not only do you stand with your children, but whenever the need be, you've always given us courage. You've always strengthened us in all our endeavors. And we are so grateful to you for today, especially today being the Sunday, and you've taken out your valuable time for us for this function. Thank you so much. It's a lovely morning, and you have added to the grace of this function more, your parents and grandparents, mothers. It's because of your strength, it's because of your support that we are able to achieve and put up the program of such a stature. Ladies and gentlemen, the essence of all religion is one. God is one. Is the idea that we advocate at CMS. We believe, we inculcate, we advocate, and we practice. And now, I invite Ms. Shraddha Tiwari and Ms. Rakshita Tripathi, my co-compares, to initiate all religion prayer and prayer dance by giving a beautiful introduction to it. Over to them. Prayer, an act of communication by humans with the sacred or holy God.
the transcendent realm, or supernatural powers. Prayer is a significant and universal aspect of religion. Hinduism, Christianity, Islam, Sikhism, Buddhism, Baha'is. Every religion believes in prayer for healing. Some call it prayer, some call it cleansing the mind. We in CMS follow the religion of righteousness, religion of faith, religion of duty, religion of law and virtue. While there are many differences among us, but we are similar in our beliefs and ethics. So now, let us enjoy the all-religion prayer by my friends. गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधे 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 तेरे बिना कृष्ण मेरे राधा रानी आधे तेरे बिना कृष्ण मेरे राधा रानी आधे कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार कोटिन रूप धरे मन मोहन तऊ न पावे पार रूप रंग की छबीली पटरानी लागे मैनू खारो खारो जमुना जी का पानी लागे मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे मैनू खारो खारो जमुना जी का पानी लागे मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे मैनू खारो खारो जमुना जी का पानी लागे अर्जियां सारी में चेहरे पे लिख के लाया हूँ तुमसे क्या मांगूं मैं तुम खुद ही समझ लो मौला 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 मेरे मौला 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 दरारे मांगे पे मौला मरम्मत मुकद्दर ही कर दो मौला मेरे मौला तेरे दर पे
स्वामी मोरा वाहे बुद्ध ही बुद्ध है बुद्ध ही बुद्ध है हर जगह हर समय वो सिद्ध है वो सिद्ध है मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है सम्यक शिक्षा से करता जो शिलवान है अहिंसा की ताकत से जो बलवान है अहिंसा की ताकत से जो बलवान है वो बुद्ध है वो बुद्ध है वो बुद्ध है बुद्ध ही बुद्ध है बुद्ध ही बुद्ध है बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि I want to praise you, Lord, much more than I do. I want to praise you, Lord, much more than I do. Learn to seek your face and the knowledge of your grace. I want to praise you. Birds in the sky sing their songs to you. Trees in the field lift their arms to you. I want to sing. I want to lift my arms to you. I want to serve you, Lord, much more than I do. I want to serve you, Lord, much more than I do. Learn to seek your face and the knowledge of your grace. I want to serve you. I want to praise you, Lord, much more than I do. I want to praise you, Lord, much more than I do. ईश्वर की सिवा कोई और है क्या जो
All religion prayer followed by prayer dance. ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु चाहे कहो श्री राम मालिक सबका एक है अलग अलग है नाम ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु चाहे कहो श्री राम ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु चाहे कहो श्री राम मालिक सबका एक है अलग अलग है नाम मालिक सबका एक है अलग अलग है नाम ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु चाहे कहो श्री राम ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु चाहे कहो श्री राम मालिक सबका एक है अलग अलग है नाम मालिक सबका एक है अलग अलग है नाम सबसे प्रभु का प्यारा नाता वही पिता है वही है माता सबसे प्रभु का प्यारा नाता वही पिता है वही है माता मंदिर मस्जिद या गिरजाघर सभी प्रभु के धाम मंदिर मस्जिद या गिरजाघर सभी प्रभु के धाम सबका एक है अलग अलग है नाम मालिक सबका एक है अलग अलग है नाम गीता बाइबल या कुरान है मालिक का सब ही में गान है
मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम. The essence of all religion is one, only their approaches are different. There's one faith, one divine light shining throughout the world. There's God in every religion, but there's no religion of God. Thank you, dear children, for such an enlightening message, helping us to see beyond ourselves and our selfish ends. Thank you so much. After a year that saw an assault on the US Capitol, horrific bloodshed in Ethiopia, a Taliban triumph in Afghanistan, great power showdowns over Ukraine and Taiwan amid dwindling US ambition on the global stage. Ladies and gentlemen, with so many catastrophes in the world, survival of humanity seems to be at stake. And no one else is responsible for it but we ourselves. Even now, if we do not mend our horrific errors, the sins that we as human beings have been committed, one savage more will turn our world into a wasteland. The whole world turning into a wasteland. In fact, we are on the verge of a doom. And unity and world unity is the only solution to all the problems which are prevalent presently in the world. We need to rise above all conflicts, ladies and gentlemen, and unite. At this note, we present before you the World Unity Prayer. As they are taking a little more time to settle down, to put the children there, there's one request. Parents, please don't stand there in the aisle, the center one, near the camera, because the complaint has come from the back that the other parents seated on either side are not able to see. And again, as the children are taking their place and they're getting ready for the World Unity Prayer, I wish to just put up one point here, that this wonderful message of all religion and talking about God being one should be the first value that we should give to our children. Today is the day when we are talking about family values. Today is the day when we are talking about the virtues and values which we must inculcate in our children. So I propose the first thing that we need to teach our children is the love and respect for other religion, love and respect for other human beings. That's the first thing. And once they have that embedded in their heart, there is no stopping. They will grow up as very good citizens and they shall come together to unite the world. So I think the stage is ready now for the World Unity Prayer. At the onset, I quote Victor Hugo: "Peace is the virtue of civilization. War is its crime. War is the greatest catastrophe
that can befall humanity. It can never be glorified, as nothing good can ever be achieved out of it. War leads to destruction, disease, starvation, poverty, and ruin, and causes death by the millions. Can we eradicate war? Can we build a peaceful world? Yes, we surely can. In modern times, we do have the technology to communicate globally and to cross cultural barriers. What is required is the will to do so. The world free from strife will help children to grow up without the fear of being killed by bombs. Humans should stop spending valuable resources in creating new ways to kill themselves with more efficiency. We must live side by side and respect each other. We need to stop judging people on the basis of how they look, speak, and pray. Nations need to give up their weapons, including nuclear. This will not happen overnight, but the process must begin now. A better world is possible. A peaceful world is possible. Since every step towards a safe and peaceful world is important. Today, we explore this possibility through this World Unity Prayer. I am a world citizen. I represent all the countries of the world. I therefore stand before you all, impressing upon the importance of unity. There are no barriers that separate us and no boundaries that prevent us from realizing that the earth is one country and mankind its citizen. It is therefore time to rise above our differences and discover the world citizen in each one of us to accomplish the goal of unity and solidarity. I pray for the happiness of all the people of the world. May unity prevail in all the countries of the world. May unity prevail on earth. We are the land of the Red Indians and have been troubled by our own conflicts. But our leaders understood the need for a united world, which is reflected in the insightful words of Martin Luther King Jr. I quote, "Darkness cannot drive out darkness.
Only light can do that. Heat cannot drive out hate. Only love can do that. Uncle. I am David Adams. I am a peace activist, a scientist, a scholar, a writer, and a journalist. I served at UNESCO, where I worked on the culture of peace, which is a set of values, attitudes, modes of behavior, and ways of life that reject violence and prevent conflicts. I am currently the coordinator of the Culture of Peace News Network and author of several books on this subject that guides people to walk on the path of peace and unity. I pray for the unity of the people of North America. May unity prevail in North America. May unity prevail on earth. A colorful carnival, exciting football matches, and the mesmerizing moves of the samba collectively make up the collage of South America. We believe that peace and unity can be achieved through progressive learning and the role of education as a universal binding force. It is rightly said by Hugo Chavez, no part of human community can live entirely on its own planet by its own law of motion and cut off from the rest of the humanity. I, Adolfo Perez Esquivel, have been known as the human rights activist and opponent of non-violence in 1970s when South America was under the violent dictatorship. I won the Nobel Prize in 1980s for being a source of inspiration to repressed people, especially in South America. I have also worked for the social development of my people by means of non-violent liberation. I pray for the people of South America. May unity prevail in South America. May unity prevail on earth. After a series of exploration, Africa emerged from darkness to light as a continent rich in culture and tradition.
stigma of apartheid and slavery that kept it in chains for hundreds of years. It is moving to an enlightened future guided by Nelson Mandela's timelessly sagacious words. I quote, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Unquote. I am Gatwal Gatgood. I have done much of my peace building work with refugees, engaging them to help resolve the wars that expel them. My urgent message now is we have to help refugees survive by giving them more chances to work and feed their families. Thus, listening to my plea, Uganda has modeled the approach with its rare policies, offering refugees farmlands and the right to travel and work. I pray for the people of Africa. May unity prevail in Africa. May unity prevail on earth. From a rich and diverse mosaic of cultural and creative expressions deeply rooted in its art, architecture, literature, to solidarity, freedom, and mutual respect in the core of the European Union. We believe in working together is the only way to face common challenges, and bringing stability is the key to overcoming them. I, Charles Michel, a Belgian politician, am serving as the President of the European Council. Growing up, listening to the stories of my parents and grandparents who had experienced the devastation of the Second World War, I know how precious peace and reconciliation are. A Europe with respect for national diversity being my objective, I promise to take this responsibility as a task and to fulfill it with commitment. I pray for the people of Europe. May unity prevail in Europe. May unity prevail on earth.
Rudd served as Australia's 26th Prime Minister from 2007 to 2010. I am a member of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Group. I am a driving force in expanding the East Asia Summit to include both the USA and Russia in 2010. On climate change, I ratified the Kyoto Protocol in 2007 and legislated in 2008 for a 20% mandatory renewable energy target for Australia. I am actively engaged in indigenous reconciliation. I pray for all the people of Oceania. May unity prevail in Oceania. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. I come from Asia, the blessed land of the Indus that gave the world the art of making paper, the Vedas, yoga, and the concept of zero. It boasts of having given birth to redeemers of mankind and of possessing the major centers of learning. History teaches us that unity is strength and cautions us to overcome our differences for a better tomorrow. So, let us join our hands to strengthen the hands of brotherhood and unity. I, Narendra Damodar Das Modi, the Prime Minister of the largest democracy in the world, wish to express my views on peace and unity. Perfection in human life is reflected in qualities that are good to God. I once again state an enduring lesson of human history. It is through openness, inquiry, engagement, and accommodation, respect for parity that humanity advances, nation progresses, and the world prospers. I pray for all the people in Asia. May unity prevail in Asia. May unity prevail on earth. Holistic education can make us realize our ethical obligation towards the society to bring about coexistence, sustainable development, and progressive transformation globally. Since wars begin in the minds of men, so must defenses of peace be created there. I appeal to all the people of the world to come together and create a world where war does not exist and people are not discriminated against. I pray
for the unity of all the continents of the world. May unity prevail in all the continents of the world. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. May unity prevail on earth. These are places in the world. Some you know, some you don't. Some you'll visit, and some you won't. Some are near, and some are far. Some sound exotic like Zanzibar. 'Cause these are places in the world. Bombay, Cape May, Mandalay, Baffin Bay, Baghdad, Leningrad, Ashgabat, Trinidad, LA, Norway, Paraguay, Monterey, Singapore, Ecuador, Bangalore, Baltimore. These are places in the world. Fiji, Sicily, Nagasaki, Tennessee, Cairo, Quito, Borneo, Idaho, Taiwan, Dijon, Saigon, Tehran, Guatemala, Oklahoma, Argentina, North Dakota. These are places in the world. Some are new and some are old. Some are hot and some are cold. Some are low and some are high. Some are wet and some are dry. 'Cause these are places in the world. Glasgow, Oslo, Fresno, Tsingtao, Falkland, Auckland, Yucatan, Disneyland, Libya, Namibia, Romania, Pennsylvania, Bora Bora, Walla Walla, Costa Rica, Bratislava. These are places in the world. High on a mountain, down on the plain, deep in the jungle, in the middle of the rain. Children laugh and children play. Everywhere, every day. 'Cause these are places in the world. Word citizen. We are world citizens, same vision as for equal rights and justice for the people living. What's happening to this beautiful world that we're living in? World citizens, lift up your voices. Oh, you know we got something to say. All we need is the same directions, heading in one way. In this world, we live as one. I know we can make it 'cause the time has come. In this world, gotta live as one. We going in the same direction, a real connection out of many, we are one. Out of many we are one. Out of many we are one. A long time this is the war for Caesar. Put on the gun with the love increase. I have to see the youth them late deceased. Beg you please make a commence the peace in a seat. We really need to bring that old thing back. More love to bring us right on track. Remember when we used to love like that? Seems like we don't know where it's at. Remember that. World, we live as one. I know we can make it 'cause the time has come. In this world, we live as one. I know we can change it 'cause the time has come. In this world, gotta live as one. The same direction, a real connection out of many, we are one. Citizen world.
as they stand here united, remember, dear parents, we must imbibe in them the value of empathy, not sympathy, but empathy, which is the ability to stand in somebody else's shoes, to look at the world through their eyes, and then understand the scenario and the root cause of all problems, and then coming up with a solution. It's only when you understand you come out with better solutions. So thank you so much, children. It was an outstanding performance. The entire hall resounded with the message of world unity and peace which they tried putting across. It was a pleasure to watch, and I'm sure we've taken down the message of world unity. Ladies and gentlemen, we need to once again give them the assurance that we are very seriously taking down the message of world unity and world peace. Yes, assurance by the way of loud clapping. Thank you so much. But the message especially comes from these tiny tots. We really need to take it very, very seriously. Thank you so much. Now I invite Miss Adiba Shaheen of Class 3E to introduce the next program. Miss Adiba. Ladies and gentlemen, the next program that I have in my list is a tribute to dear grandparents. And what a better way to introduce the item but by the way of a child who truly is there to express the feelings that the child has for the dear grandparents. Grandparents are the perfect blend of love, laughter, and happy memories. Good afternoon and judgment to one and all. Grandparents are truly a blessing in our lives. They are the ones who have made our parents the way they are. They are our lifeline. We children look up to them as a friend, and they are more protective and caring than our parents. We enjoy enormous love and support from our grandparents. They are our magicians. They have the power to hold our hand and heart forever. Now we will pay heartfelt tribute to our grandparents. दादा दादी से बच्चों का अलग ही होता नाता, पकड़ के उंगली चलना उनके मन को कितना भाता। नाना नानी से बच्चों का अलग ही होता नाता, पकड़ के उंगली चलना उनके मन को कितना भाता।
What a beautiful sight. All beautiful grandparents or the respected grandparents right in front in support of the tiny tots who've just given them a wonderful tribute, showcasing their faith, their love, for all the care that they spread in the family, the values they inculcate, the love that they sprinkle on the family and all the members of the family. Thank you, dear grandparents, for your unconditional support, the love you shower on these little ones. It's absolutely infinite, so pure, and so much wanted. Your concern and care goes a long way ensuring the well-being of all the members of the family. Thank you for everything, and thank you also for gracing this occasion. Thank you for taking out time from your busy schedule to come and support these little ones. They are absolutely grateful to you. It's a lovely sight, audience seated at the other side, I think can motivate these little ones. Lovely. It's a beautiful sight. You can see the little ones jumping in excitement, and they have a reason, for they have the support of the most respected and experienced members of the family right at the back. As you may see here, that's the beautiful sight. Thank you so much. Now I think they can teach us, please escort them and take them back to their seats. Sir is joining them. Yes, sir is joining them for a group photograph. A treat, pleasure, lot of happiness, joy, all exhibited. Thank you, sir. Thank you, dear grandparents, for being here. 100 victories in 100 battles is no achievement, ladies and gentlemen. Rather, conquering 100 hearts without a single battle is the real achievement. We at City Montessori School not only impart the best quality education, but also inculcate in children an intense feeling for political unity and economic unity in the world, which would bring to an end all disputes among nations. Disputes which have been the principal cause of wars, including the world wars in the past. If today City Montessori School has attained a unique status for being the world's largest school by pupils in a single city with more than 58,000 students studying in 21 campuses, recognized by the Guinness Book of World Records, it is because of the vision of a dynamic leader, the founder manager of the school, respected Dr. Jagdish Gandhi sir, who is a staunch promoter of unity of mankind, unity of religion, universal brotherhood and world peace. At this note, I invite sir to come up on the stage and address the gathering. And ladies and gentlemen, may we please put our hands together for our respected sir.
परमादरणीय डॉक्टर कल्पना त्रिपाठी जी, सीनियर प्रिंसिपल ऑफ महानगर, परमादरणीय सिंगल दीदी जी, द वाइस प्रिंसिपल ऑफ महानगर, परमादरणीय सभी टीचर्स जो महानगर कैंपस की हैं, और सभी अभिभावकगण जो भारी तादाद में आए हैं, परमादरणीय अजय पांडे एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट हमारे बीच में उपस्थित हैं। दो बच्चे आपके पढ़ते हैं हमारे पास, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट हैं लखनऊ की और यहाँ आई हुई हैं। प्रिय मित्रों, हमारी एक प्रार्थना रोजाना हम बच्चों को कराते हैं। ये बड़ी सिंपल है और बहुत छोटी सी प्रार्थना है, लेकिन अर्थ जानना इसका बहुत जरूरी है माता पिताओं को, ताकि बच्चों को समझा सके। ये प्रार्थना है, आई बेयर विटनेस टू माय गॉड दैट thou hast created me to know thee and to worship thee। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूं और तेरी पूजा करूं। परमात्मा को जानने की मानी क्या है? उसकी शिक्षाओं को जानना। उसकी शिक्षाएं वो कैसे भेजता है? अपने संदेश वाहकों के द्वारा। उसके संदेश वाहकों को हम जानते हैं। उसने राम को भेजा 7,500 वर्ष पूर्व, जिन्होंने मर्यादा का पाठ पढ़ाया, और वो कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। उनकी मृत्यु के 2,500 वर्ष के बाद इस धरती पर परमात्मा ने भगवान कृष्ण को भेजा। उनके साथ गीता का ज्ञान भेजा, जिसमें था न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। For the sake of justice, even if you have to punish your brother, your family members, punish them, because justice must be upheld। क्योंकि न्याय नहीं होगा तो फिर अन्याय होगा। परिवार में भी न्याय की जरूरत है, समाज में भी न्याय की जरूरत है, संस्थाओं में भी न्याय की जरूरत है। स्कूल हो, कॉलेजेस हो, फैक्ट्री हो, शासन हो, हर जगह न्याय की आवश्यकता है, और इसके लिए न्यायालय बने हुए, और इसके लिए हमारी एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ बैठी हैं, ये न्याय करने के लिए बैठी है। तो न्याय बहुत आवश्यक है। ये बात परमात्मा ने अपने संदेश वाहक मैसेंजर भगवान कृष्ण के द्वारा भी की 5,000 वर्ष पूर्व। उनकी मृत्यु के 2,500 वर्ष के बाद इस धरती पर परमात्मा ने बुद्ध को भेजा, और उनके साथ एक त्रिपिटक का ज्ञान भेजा, जिसमें था सम्यक ज्ञान। सब बराबर है, ऊंच नीच गलत है, वर्ण व्यवस्था गलत है। ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये ऊंचे है, ये नीचे है। ये व्यवस्था उन्होंने कहा कि बहुत ही ये मनुष्यों की बनाई है, परमात्मा ने नहीं बनाई, और परमात्मा ने बनाई होती तो इसका गीता में कहीं जिक्र होता, बाइबल में होता, कुरान शरीफ में होता, त्रिपिटक में होता, गुरु ग्रंथ साहब में होता, किताब एकदस में होता, किताब अजावेस्ता में होता। किसी पवित्र पुस्तक में जाति का वर्णन नहीं है कि ऊंची जाति नीची जाति। ये व्यवस्था तो मनुष्यों की बनाई है। इनफैक्ट हमारे यहाँ मनु महाराज हुए, और उन्होंने महर्षि मनु ने ये व्यवस्था दी, और हमारे देश में संत और महात्मा और ऋषि मुनियों की बात को हम बिना कोई तर्क वितर्क के स्वीकार कर लेते, अस्वीकार हो गई। अब वर्ण व्यवस्था बढ़ी
जातियां और उपजातियां बनी। अनेक उपजातियां ब्राह्मणों में बनी, क्षत्रियों में अनेक उपजातियां बनी, वैश्यों में अनेक उपजातियां और शूद्रों में अनेक उपजातियां। तो जातियों और उपजातियों में ये पूरा समाज बट गया। और समाज की जो एकता थी, जो समाज का पर्पज है, सुख के लिए, आनंद के लिए सबसे जरूरी चीज है एकता। और जब समाज में एकता नहीं होगी तो सुख और आनंद कहां से आएगा? तो ये अव्यवस्था फैली और ये बुद्ध जी ने कहा कि ये वर्ण व्यवस्था हमारे विनाश का कारण। तो शिक्षा मिली है कि अपने बच्चों को हम वर्ण व्यवस्था से दूर रखें, उनको बताएं सब बराबर है। परमात्मा ने सारी सृष्टि के प्राणियों को एक जैसा बनाया है, किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं बनाया। परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया, सबको आत्मा दी है और आत्मा परमात्मा से आती है। बाकी तो शरीर तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा, ये पंच तत्वों से बना शरीर तो सबका एक सा है। संसार में प्रत्येक आदमी का क्षिति माने मिट्टी, जल माने जल पानी, पावक माने अग्नि और क्षिति जल पावक गगन तत्व में और समीर वायु है। तो इन पांच तत्वों से शरीर बना है हर एक व्यक्ति का। और ये पांचों चीजें यहाँ की हैं, भौतिक चीजें जो मिट्टी है, जल है, वायु है, अग्नि है, ये सब चीजें भौतिक हैं। इनसे शरीर बना और आत्मा परमात्मा की दी हुई है, सबको एक सी दी है, तो कोई फर्क नहीं। तो इसलिए जातियों का भेदभाव करना ये बिल्कुल बच्चों के हित में नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को जरूर बताएं कि जाति पाति का भेदभाव कभी भी वो ना अपने दिल में लाए। और बुद्ध की मृत्यु के 500 वर्ष के बाद, यानी आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है और उन्होंने करुणा का सागर पाया। उन्हें सूली दी जा रही थी, कीलों से ठोक के मार रहे थे लोग, और वो प्रार्थना कर रहे थे, हे परमात्मा तू इन्हें माफ कर देना जो मुझे सूली दे रहे हैं, क्योंकि तो अबोध और अज्ञानी है, ये अपराधी नहीं। इनके माता पिता ने और इनके शिक्षकों ने इन्हें ईश्वर का ज्ञान ही नहीं कराया, आत्मा का बोध ही नहीं कराया, तो ये तो अज्ञानी है। इसलिए ये अज्ञान का वश कर रहे, मुझे मार रहे। तो ये अपराधी नहीं, उन्हें अपनी चिंता नहीं थी, उन्हें उनकी चिंता थी जो मार रहे थे कि इन्हें परमात्मा कहीं दंडित न कर दे, इसके लिए वो प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने कहा करुणा और दया जीवन में बहुत जरूरी है, हम बच्चों को करुणा और दया की शिक्षा दें। उनकी मृत्यु के 600 वर्ष के बाद, यानी आज से 1400 वर्ष पूर्व हजरत मोहम्मद साहब का आगमन धरती पर होता है और उन्हें 13 वर्षों तक मौत के साए में रखा गया। 12 वर्ष जंगली ट्राइब्स ऑफ अरेबिया उन्हें मारना चाहते थे, तो वो 13 वर्ष के बाद मक्का से मदीना गए डेड ऑफ द नाइट में। और जब कातिलों ने देखा, उस दिन उन्होंने तय कर लिया था कि आज मोहम्मद को मारना है। जब कहीं भी मोहम्मद मक्का में दिखाई नहीं पड़े तो उनके बहुत सारे दल निकल के चारों तरफ मोहम्मद की तलाश में गए, क्योंकि उन्होंने तो उस दिन मारना ही था, तय कर लिया था। ये बारबर जंगली ट्राइब थे। तो वो एक दल उनमें से मदीने की तरफ गया और जब मोहम्मद साहब के साथियों ने देखा कि बहुत बड़ा कातिलों का दल आ रहा है, तो वो अबिसीनिया की तरफ चले गए और इन्होंने अबिसीनिया तक पीछा किया। मोहम्मद साहब गरीबों को बचाते थे। ये बार-बार जंगली ट्राइब गरीबों की बहू बेटियों को ले जाएं, बच्चों को ले जाएं, पशुओं को ले जाएं, उनके साथ जुल्म करते थे
और उनके साथ अन्याय करते थे। मोहम्मद साहब उन्हें बचाने की कोशिश करते थे। बार बार जंगली ट्राइब्स ये चाहते थे कि तुम कौन होते हो इन गरीबों को बचाने वाले, हम तुम्हें मारेंगे। तो वो हर वक्त मौत के साए में 13 वर्षों तक जिए। उसके बाद उन्हें कुरान शरीफ परमात्मा की ओर से 23 वर्ष में नाजिल हुई और कुरान की आयतें आती, फरिश्ता देता। मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, तो एक दो लोग उनके साथी थे, उनसे कहते थे कि भाई नोट कर लो। तो वो भेड़ की सूखी खालों पर या जो खजूर के पत्ते होते थे सूखे, क्योंकि खजूरें वहाँ बहुत होते हैं खजूर, तो खजूर के पत्ते सूखे पत्तों पर वो नोट कर ली जाती थी। 23 वर्षों में पूरी कुरान शरीफ की आयतें खुदा की तरफ से मोहम्मद साहब को मिली और वो सब इकट्ठी हुई तो उनसे कुरान शरीफ बनी। कुरान शरीफ की जो पहली आयत है, पहली शिक्षा है, वो है खुदा रब्बुल आलमीन। खुदा रब्बुल आलमीन, रब माने परमात्मा, और रब्बुल कहें या रब कहें या रब्बा कहें, तो प्यार से कुछ भी कहें, तो रब्बुल आलमीन है। आलमीन माने इस धरती का रब है, इस सृष्टि को बनाने वाला। तो परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, खुदा ने बनाई। उसके नाम तो अनेक है, खुदा कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, गॉड कहें, वाहे गुरु कहें, और जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, हजारों भाषाएं। हर भाषा में एक नाम है, लेकिन वो एक ही है। राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, मोहम्मद का, नानक का, ईसा का, बाप का, बाहुल्ला का, जोरास्टर का, मोजेस का, इब्राहिम का और भगवान महावीर का। एक ही परमात्मा, एक आध दर्जन परमात्मा नहीं है, एक आध दर्जन अल्लाह नहीं है, एक आध दर्जन खुदा नहीं है। एक दो दर्जन खुदा हो, एक दो दर्जन भगवान हो, एक दो दर्जन ईश्वर हो, एक दो दर्जन गॉड हो, तो ये नहीं है, एक ही है। उसके नाम अनेक हैं। अब ये पानी है, एक बच्चा कह रहा है कि ये तो पानी है, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं ये वाटर है, और झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है। टीचर आई, क्या झगड़ा है? सर ये वाटर कहता है तो पानी है, दूसरा कहता है नहीं सर ये तो पानी है। तो झगड़ा किस बात का है? ना समझदारी है। स्कूल इज द लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन, spiritual direction, guidance and leadership to students, their parents and the society in general. विद्यालय समाज के प्रकाश का केंद्र है। इसका काम है ईश्वरीय प्रकाश बच्चों को देना। और विद्यालय यदि प्रकाश का केंद्र नहीं है तो फिर अंधकार का केंद्र बनेगा, बच्चों के जीवन में अंधेरा भर देगा और बच्चे समाज में जाके अंधेरा भर देंगे। तो विद्यालय एक ईश्वरीय प्रकाश का केंद्र है। और ईश्वरीय प्रकाश क्या है? कि ईश्वर एक है। इतना सिंपल था, ईश्वर तो एक ही है। तेरा अल्लाह बड़ा है कि मेरा भगवान बड़ा है? अरे भाई अल्लाह भगवान तो एक ही बात है, दो तो है ही नहीं। और इन सब की तो मृत्यु हो गई जितने अवतार थे, राम, कृष्ण, बुद्ध, मोहम्मद, नानक, ईसा, बाहुला, जोरास्टर, मोजेस, इब्राहिम, भगवान महावीर, सबकी मृत्यु हो गई। परमात्मा तो आज भी जिंदा है, खुदा तो आज भी जिंदा है, क्योंकि वो तो आत्म तत्व है। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। तो आत्मा तो अजर अमर है, परमात्मा तो अजर अमर है। परमात्मा तो आज भी है, आगे भी रहेगा। जब तक सूरज, चांद, धरती और आकाश रहेंगे तब तक रहेगा, और उसके बाद भी रहेगा। जब कुछ भी धरती पर नहीं था तब भी परमात्मा था, खुदा था, अल्लाह था, गॉड था, जो भी आप कहें। और जब धरती बना दी तब भी अल्लाह है, खुदा है, परमात्मा है। और जब ये सृष्टि को मिटा देगा तब भी
और जब सृष्टि बना देगा तब भी परमात्मा तो सदैव रहता है, वो कभी न जन्म लेता है न उसकी मृत्यु होती है। और वो परमात्मा है, वो अंधा भी नहीं है, गूंगा भी नहीं है, बहरा भी नहीं है, वो सब देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है, और जिसको चाहता है उसको बहुत देता है। धन नहीं, उसको इतना दे देता है उनको अवतार बना देता है। साधारण व्यक्ति थे जितने अवतार थे, और हम लोगों ने सबने बहुत मारा पीटा, बहुत दुख दिए। राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया अकारण, और कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और बुद्ध को मारने के लिए अंजलि मार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और ईसा को मारने के लिए तो कीलें ठोक दी गई जीते जी, और उन्हें मार दिया गया कीलों को ठोककर। और मोहम्मद को तो 13 वर्षों तक मौत के साए में जीना पड़ा। और गुरु गोविंद सिंह के तो दोनों पुत्रों को दीवार में चुन दिया गया जीते जी। और बाप जो घोषणा करने आए थे बाहुल्ला की कि बाहुल्ला आने वाले हैं, उनको 750 गोलियों से ईरान सरकार ने ऑर्डर दिया मिलिट्री को, 750 मिलिट्री को, कि आप जाके इसको मारिए। तो तरबीज के चौराहे पर खड़ा करके 750 गोलियां एक साथ दागी गई, उनको मार दिया गया। और 20,000 उनके अनुयायियों को कत्लेआम ईरान में कर दिया गया। और जब बाहर आए तो 40 वर्षों तक उन्हें जेल में रखा गया, और उन्हें 4 देशों में देश निकाला हुआ। उन्हें दोनों हाथों में रस्से बांध दिए जाते थे, तागे वाला उन्हें तेहरान की सड़कों पर ईरान में घसीटता था, और जब वो सड़क पे घसीटते थे तो कमर उनकी छिल जाती थी, कमर में बड़े बड़े घाव हो गए थे, और उन्हें लोग पत्थर मारते, ईंटा मारते, धूल फेंकते, और उन्हें फिर डंजिन में डाला गया, ऐसी डंजिन में जिसमें सर्प थे, रेप्टाइल्स थे, झिंगुर थे, मच्छर थे, बेतहाशा बदबू थी, और उसमें केवल ऐसे कातिलों को रखा जाता था जो तड़प तड़प के मर जाते थे, शायद ही कोई जिंदा बचता हो। वहां पर बाहुल्ला को गले में भारी भारी लोहे की जंजीरें डाल दी गई, और पैरों में जंजीरें डाल दी गई, वहां रखा गया। 3 महीने वो रहे, उसी में उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। और उन्होंने कहा, हे प्राणी, मेरा प्रथम परामर्श है तुझे कि तू एक शुद्ध, दयालु और ईश्वरीय प्रकाशित हृदय धारण कर, ताकि पृथ्वी का अनंत साम्राज्य तेरा हो। दूसरी बात उन्होंने कही, एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु, और निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभो। My God, unite the hearts of thy servants and reveal to them the great purpose. May they follow thy commandments and abide in thy law. Help them, O God, in their endeavor and grant them strength to serve thee. O God, leave them not to themselves, but guide their steps by the light of thy knowledge and cheer their hearts by thy love. Verily, thou art their helper and their Lord. तो बाहुल्ला ने कहा कि हर घर, जितने परिवार हैं, उसमें दादा दादी, माता पिता, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, या जो भी घर में सदस्य हो, सबके हृदय पवित्र हो जाए तो एक हो जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरा प्रथम परामर्श है, तो शुद्ध, दयालु और ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित हृदय धारण कर। ये शुद्ध हृदय होगा तो एक हो जाएगा। और हृदय में कलुष है, कोई पाप है,
तो हृदय एक नहीं होंगे। पति पत्नी की, माता पिता की, और घर में नरक हो जाएगा, जीना दूभर हो जाएगा। और हृदय एक है तो घर में आनंद की वर्षा होगी, स्वर्ग आ जाएगा, आनंद ही आनंद होगा, प्रगति ही प्रगति होगी। जिस घर में परिवार में एकता होती है उस घर के सभी सदस्य प्रगति करते हैं और एक से ऊंची तरक्की करते हैं। और जहाँ तकलीफ, जहाँ दिल में कोई खटास होती है उस घर में बहुत मुश्किल हो जाता है। पति पत्नी हर वक्त सोचते हैं कि इससे तो मौत हमारी भरी है, घुट घुट के जीते हैं। तो ये घुट घुट के जीने के लिए बाउला ने कहा कि नहीं, मनुष्य का जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि हम घुट घुट के जिए, बल्कि हम हृदय पवित्र बनाए, कोई कलुषी न हो। Possess a pure, kindly and a radiant heart, that thine may be a sovereignty, ancient, imperishable and everlasting. हे प्राणी, तो पवित्र हृदय, दयालु हृदय और ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित हृदय धारण कर, ताकि पृथ्वी का अनंत साम्राज्य तेरा हो। और एक कर दे हृदय अपने। My God, unite the hearts of thy servants and reveal to them the great purpose. हेलो हम लोग होली में और ईद में गले मिलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी गले मिलते हैं। तो बावला साहब ने कहा कि भैया गले मिलने से काम नहीं चलेगा, हृदय मिलने से काम चलेगा। अब समय हृदय मिलाने का आ गया। देखिए, रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर रखा है, 10 महीने से ऊपर हो गए और रोजाना हजारों आदमियों को वो मार रहा है रशिया। घर के घर तबाह कर दिए, शहर के शहर खंडहर बना दिए, उजड़ गया है सब सारा यूक्रेन। क्यों? क्योंकि हृदय एक नहीं। परिवार में, गांव में, नगर में, मोहल्ले में, जिले में, प्रांत में, देश में, दुनिया में बावला ने कहा हृदय एकता हो जाएगी तो स्वर्ग आ जाएगा इस धरती पर। इस धरती पर स्वर्ग उतारना है तो हृदय की एकता करना पड़ेगी। उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा द बेसिक पर्पस ऑफ ऑल द रिलीजन, सारे धर्मों का एक उद्देश्य है। द बेसिक पर्पस of all the religion is to safeguard the interest and promote the unity of the human race. हर धर्म का एक ही उद्देश्य है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, भाई हो, हर धर्म का एक उद्देश्य है। The basic purpose of all the religion is to safeguard the interest and promote the unity of the human race. मानव हितों की रक्षा और हृदय की एकता, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। The basic purpose of all the religion is to safeguard the interest and promote the unity of the human race and to foster the spirit of love and fellowship amongst men. Spirit of love and fellowship. सबके अंदर एक ही भावना हो, प्रेम की, एक दूसरे के लिए प्रेम। स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप। हम सब मित्र हैं, मित्रता का भाव सब में हो, यही हर धर्म का उद्देश्य है। अच्छा, मजे की बात यह है, हर धर्म का केवल एक ही उद्देश्य है, मानव मात्र की एकता, और धर्मों के नाम पर ही सारी लड़ाइयां हो रही हैं, क्योंकि लोगों ने धर्म को समझा ही नहीं है। All the revealed books of God are unerring and corrected wisdom that are sent by one God as required from age to age to open the mental locks of mankind and to cure the maladies of the age. So, all the
religions, all the books, जितनी बुक्स आई है, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, किताबें अक़दस, किताबें अजाविस्ता, जो भी पवित्र पुस्तकें आई हैं, एक परमात्मा से आई हैं, अनरिंग है और कलेक्टेड विजडम है। इनमें कोई त्रुटि नहीं है। सारे संसार के सारे विद्वान मिल जाएं और गीता में या कुरान में या बाइबल में या गुरु ग्रंथ साहब में या किताबें अक़दस में या किताबें अजाविस्ता में या त्रिपिटक में कोई कमी निकालना चाहें, कॉमा फुल स्टॉप घटाना बढ़ाना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि किताबें इन अवतारों की नहीं है। अवतारों का तो जन्म हुआ, इनकी तो मृत्यु हो गई। ये तो उनकी किताबें हैं जिसका कभी न जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है, परमात्मा की किताबें, इसीलिए इनको होली बुक्स कहते हैं। होली कुरान शरीफ, होली गीता, भगवत गीता। तो ये पवित्र पुस्तकें क्यों हैं? क्योंकि ये अपवित्र नहीं है, ये पवित्र है क्योंकि परमात्मा से आई है, एक परमात्मा से आई है। परमात्मा एक ही है। जब एक ही परमात्मा है, सारी किताबें एक परमात्मा से आई हैं, फिर झगड़ा किस बात का है? अज्ञानता का है। और अज्ञान को कौन मिटाएगा? विद्यालय का काम है, क्योंकि विद्यालय क्या है? समाज के प्रकाश का केंद्र है। यदि विद्यालय प्रकाश देना बंद कर दे तो अंधेरा देना शुरू कर देगा। या तो प्रकाश का केंद्र बनेगा या अंधकार का केंद्र बनेगा। स्कूल इज द लाइट ऑफ द सोसाइटी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन, spiritual direction, guidance and leadership to students, their parents and the society in general. तीसरी बात एक और है कि ये प्रोग्रेसिवली रिवील किया है परमात्मा ने। एक दिन में सब ज्ञान नहीं आया। गीता 5000 वर्ष पूर्व भेजी, त्रिपिटक 2500 वर्ष पूर्व भेजा, बाइबल 2000 वर्ष पूर्व आई, कुरान शरीफ 1400 वर्ष पूर्व आई, गुरु ग्रंथ साहब 500 वर्ष पूर्व आया, किताबें अक़दस 200 वर्ष पूर्व आई। तो ये progressive revelation means religious truth is revealed by God progressively and cyclically over a time through a series of divine teachers, and their teachings are tailored to suit the needs of different ages and places of their appearance. So all the revealed books of God, दो तीन बातें समझ लें, all the revealed books of God are unerring and corrected wisdom. इनमें कोई त्रुटि नहीं है और करेक्टेड विजडम है। और किसने करेक्ट की? स्वयं परमपिता परमात्मा ने। और करेक्ट कर दी, काहे में रख दी? किन किताबों में? गीता में। तो गीता में क्या है? बुद्धिमत्ता। मनुष्य को बुद्धिमान बनाने के लिए ज्ञान की भंडार है। अथाह ज्ञान है गीता में, अथाह ज्ञान है त्रिपिटक में, बाइबल में, कुरान में। अथाह, जिसकी कोई था नहीं है। ये करेक्टेड विजडम है, अनरिंग है और करेक्टेड विजडम। तो इन शिक्षाओं को जानना। I bear witness to my God that thou hast created me to know thee. तुझे जानने के लिए and to worship thee. मनुष्य का जन्म केवल दो चीजों के लिए हुआ है। एक तो ये कि मनुष्य परमात्मा को, अपने सृजनहार को, अपने रचनाकार को जाने, अर्थात उनकी शिक्षाओं को जाने। तो शिक्षाओं को जानना ही परमात्मा को जानना है। शिक्षाओं को जानना, ये परमात्मा को जानना है। और पूजा क्या है? पूजा है उन शिक्षाओं पर चलना। राम की मर्यादा हम जीवन में अपनाएं, अमर्यादित कोई कार्य ना करें। हमारा कार्य हर एक मर्यादित हो, मर्यादा के अंतर्गत हो, अमर्यादित न हो। हम न्यायप्रिय हो, घर में भी कोई अन्याय न करे,
समाज में भी कोई अन्याय न करे, हम कोई ऐसा काम न करें जो किसी का अन्याय हो। ये 5000 वर्ष पूर्व है। मर्यादा का ज्ञान 2500 वर्ष पूर्व, 7500 वर्ष पूर्व है राम के द्वारा। और बुद्ध के द्वारा समता का ज्ञान आया, सम्यक ज्ञान, सब बराबर है। और ईसा के द्वारा करुणा की शिक्षा आई 2000 वर्ष पूर्व, और त्रिपिटक आया था 2500 वर्ष पूर्व, जिसमें सम्यक ज्ञान था, सब बराबर। और मोहम्मद साहब ने भाईचारे की शिक्षा दी। खुदा रब्बुल आलमीन है, एक खुदा के बंदे हैं, दुनिया के इंसान भाई भाई हैं। तो कुरान शरीफ का संदेश भाईचारे का है, मोहब्बत का है, प्रेम का है। कुरान शरीफ में कहीं भी नफरत की कोई जगह ही नहीं है। कुरान शरीफ में बहुत अच्छी अच्छी तालीमात है। 5 बार प्रार्थना करो दिन में, ताकि तुमसे कोई ऐसा एमाल न हो, ऐसा काम न हो जाए, ऐसा मन में ख्याल ना आवे जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हो, ईश्वर की मर्जी के विपरीत हो। तो जो भी काम करो वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार करो। 5 बार नमाज पढ़ने के लिए, नमाज माने प्रार्थना करने के लिए कहा गया। उसमें कहा है कि कोई भूखा हो तो पहले रोटी इसको खिलाओ, तब रोटी खाओ। रोजा, नमाज और जकात, दान दो गरीबों को। और रोजा रखते हैं तो आप देखिए कि 30 दिन तक सड़ी गर्मियों में, अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, मई भर चलेंगे। और मई में कभी कभी कोई दिन 12 घंटे का नहीं, 13 घंटे 14 घंटे का भी हो जाता है, क्योंकि सूरज निकलने के पहले कुछ ले सकते हैं और सूरज छिपने के बाद। और एक बूंद पानी भी दिन भर में नहीं लेते, एक कतरा रोटी का नहीं ले सकते, चाहे कितनी भूख लगी हो। तो ये मोहम्मद साहब ने जो तालीम दी है, जो खुदा से आई है, मोहम्मद साहब को आई, वो ये आई कि तुम अपने आप को, अपने चरित्र को ऊंचा उठाओ, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाओ। तो खुदा ने जो तालीम भेजी है वो हमारी भलाई के लिए भेजी है। हम लोग क्या करते हैं, उनकी किताबों की पूजा करने लगते हैं। हमको भेजी हैं किताबें, उनकी गहराई में जाएं, उनको समझें, उनका पालन करें। तो यही हमारी प्रार्थना है। I bear witness to my God that thou hast created me to know thee. तुझे जानने के लिए, अर्थात तेरी शिक्षाओं को जानने, जो तेने अपने अवतारों के माध्यम से, या उन्हें अवतार कहें या मैसेंजर ऑफ गॉड कहें या संदेश वाहक कहें, तो अपने संदेश वाहकों के द्वारा जो दिव्य ज्ञान तेने भेजा है उसको हम गहराई में जाएं, जाने और उस पर चले, उसका पालन करें। हम उस ज्ञान को न तो जानना चाहते और न पालन करना चाहते। बाकी रिचुअल्स करेंगे। क्या साहब पूजा में बैठे, भैया कितनी देर और लगेगी? अरे साहब 1 घंटा तो लगेगा ही, और भी कितनी देर से बैठे? साहब 1 घंटे से बैठे हैं, 2 घंटे की उनकी पूजा होती है। आप क्यों वेस्ट करते हो 2 घंटे? Why do you waste your time? Obey the teachings of God. मर्यादित जीवन व्यतीत करो, न्याय का काम करो, सबको बराबर मानो, ऊंच नीच खत्म करो, दयालुता हो मन में, करुणा हो, भाईचारे की भावना हो, त्याग की भावना हो। नानक जी को 20 रुपए दिए पिताजी ने, जाओ सौदा ले आओ और कुछ बेचा करो तो घर में आमन नहीं आएगी। तो नानक जी गए पैसा लेके, रास्ते में
तड़पते हुए लोग मिले, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो नानक जी ने पूछा कि भाई तुम क्यों चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो? बोले हम भूखे हैं, 15-15 20-20 दिन से खाना नहीं मिला, हमारे पास पैसे नहीं है जो हम खरीद सकें, खा सकें। तो नानक जी ने 20 रुपए का खाने पीने का सामान खरीदा, सबको बांट दिया। लौट के आए, पिताजी ने पूछा सौदा ले आए? हाँ पिताजी ले आया। क्या लाए हो? बोले सच्चा सौदा लाया हूं। ये क्या होता है? पिताजी वो गरीब लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनको 15-15 20-20 दिन से खाना नहीं मिला, मैंने 20 रुपए का खाना खरीद के सबको बांट दिया। जानते हो उन्होंने क्या दिया? मुझे दुआएं दी हैं और कहा कि नानक तुम इस संसार के बहुत बड़े इंसान बनोगे। पिताजी आप कहते हैं कि गरीब दुआएं दे दें तो परमात्मा पूरी करता है, क्या इनकी दुआओं को परमात्मा पूरी करेगा? अवश्य पूरी करेगा बेटे। और तुम, मुझे गर्व है तुम्हारे ऊपर, तुम मेरे घर में एक अवतार पैदा हुए। इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारे अंदर इतनी भावना त्याग की है तो तुम महान बनोगे। लंगर लगते हैं गुरुद्वारों में, हजारों की तादाद में गरीब लोग खाना, हर जब भी लंगर लगता है उनके यहाँ तो खाते हैं। और सब लोग, सिख लोग अपनी जो भी कमाई होती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा गुरुद्वारे में देते हैं लंगर में। तो ये त्याग की भावना सिखाई है, नानक जी ने सिखाई। तो त्याग करना चाहिए जो भी हम कर सके। और हृदय की एकता तो बहुत जरूरी है। तो यही हमारी प्रार्थना है कि आई बियर विटनेस टू माई गॉड that thou hast created me to know thee and to worship thee. Know thee means तुझे जानने के लिए, तेरी शिक्षाओं को जानना ही तुझे जानना है, और तेरी पूजा करने के माने उन शिक्षाओं पर जो तैने भेजी है उन पर चलना, यही पूजा है तेरी। परमात्मा ने कहा कि तुम मर्यादित जीवन व्यतीत करो, न्यायप्रिय बनो। हम न मर्यादित जीवन व्यतीत करते हैं न न्याय का काम करते हैं। उन्होंने कहा करुणा करो, हमारे मन में करुणा का कोई भाव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि त्याग करो, हम कोई त्याग ही नहीं करते। तो जो आज्ञाएं दी हैं उनका तो पालन नहीं करते, बाकी हम घंटे 2 घंटे पूजा करते हैं, तो इस पूजा का क्या मानिए? गंगा में डुबकी लगा ली, 2-4 तिलक विलक लगा लिए, यहाँ सारे शरीर में लाल लाल वो लगा लेते हैं, और सुपारी इधर रख दी, चावल 21 इधर रख दिए, 21 चावल इधर रख दिए, पता नहीं क्या क्या रिचुअल सब होते हैं। ये रिचुअल चावल को इधर रखना उधर रखना, ये सब, इससे कोई पूजा नहीं होती। पूजा केवल एक है, परमात्मा की जो शिक्षाएं, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, त्रिपिटक, किताबे अक़दस, किताबे अजाविस्ता में जो शिक्षाएं भेजी हैं उन शिक्षाओं पर चलना, उनको जानना, उनकी गहराई में जाना। जिन खो जा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, तो उनकी गहराई में जाना, उनको समझना और जीवन में अपनाना, ये प्रभु की भक्ति है। I testify at this moment to my powerlessness and to thy might. तू शक्तिशाली है, मैं शक्तिहीन हूं। परमात्मा की शक्ति क्या है? परमात्मा कहता है, whosoever has recognized me will arise and serve me with such determination that the powers of the earth and heaven shall be unable to defeat his purpose. जो कोई मुझे पहचान लेगा, उसे धरती और आकाश की कोई शक्ति मेरी सेवा से रोक नहीं सकती। राम ने, कृष्ण ने, बुद्ध ने, मोहम्मद ने, नानक ने, ईसा ने, बाब ने, बाउल्ला ने, जोरास्टर ने, मोसेस ने, अब्राहम ने, भगवान महावीर ने,
इन सब ने पहचान लिया और इन्हें धरती और आकाश की कोई शक्ति नहीं रोक पाई प्रभु की सेवा से। बहुत तकलीफें दी गई, बहुत मारा पीटा गया, बहुत सताया गया, सभी अवतारों को बहुत दुख दिए हम लोगों ने, बेतहाशा दुख, इतने दुख दिए हैं इन अवतारों को, इतने दुख दिए हैं, इतने दुख इनमें सहन करने की शक्ति आ गई। ये जो शक्ति है प्रभु की राह में, दुख सहन करने की शक्ति, यही शक्ति है। तू शक्तिशाली है तो प्रभु की राह में कष्ट उठाने की शक्ति तेरे अंदर परमात्मा ने दे दी। तो ये परमात्मा की कृपा है इन अवतारों के ऊपर कि इन्हें इतनी शक्ति मिली। तुम्हारी पॉवर्टी एंड thy wealth, तू धन धान्य से पूर्ण है, मैं निर्धन हूं, तेरा धन क्या है? फिर वही बात है, whosoever has recognized me will arise and serve me with such determination that the powers of the earth and heaven shall be unable to defeat his purpose. जो कोई मुझे पहचान लेगा उसे धरती और आकाश की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। ईसा को कीलें ठोकी जा रही हैं और ईसा प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए चिंता नहीं है कि उनकी मृत्यु हो रही है, उनको मार रहे हैं लोग, उन्हें चिंता उन लोगों की है जो मार रहे हैं कि परमात्मा उनसे कहीं नाराज न हो जाए। हे परमात्मा, तू इन्हें माफ कर दे जो मुझे सूली दे रहे हैं। इतनी आत्मा का बल, इतना आत्मा में बल आ जाता है। ये है धन धान्य से पूर्णता, आध्यात्मिक धन। इन सब अवतारों के पास अपार तकलीफें आई, यही तो इनका आध्यात्मिक धन है। To my poverty and to thy wealth, there is none other God but thee, the help in peril, the self-sustaining. तेरे अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है, तू अकेला है। और तेरी दो बातें हैं, तू संकट में सहायक है और स्वनिर्भर है, सेल्फ सब्सिस्टिंग। तुझे किसी संसार के व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं है और संकट में सहायक है। अब मेरा संकट क्या है? सबसे बड़ा इंसान का सबसे बड़ा संकट है उसके अंदर कोई ऐसा विचार आ जाए जो ईश्वरीय न हो, अनिश्वरीय हो। इससे बड़ा और कोई संकट नहीं, क्योंकि विचार यदि अनिश्वरीय आएगा, बुरा आएगा, तो परिणाम क्या होगा? बुरे काम होंगे, और बुरे काम करेंगे तो उसका परिणाम बुरा मिलेगा। तो संकट में सहायक है। तो संकट क्या है सबसे बड़ा मनुष्य का? बच्चों को ये बात सिखानी है कि बेटे, मनुष्य का सबसे बड़ा संकट है कोई ऐसा विचार मन में आए जो ईश्वरीय नहीं है, अनिश्वरीय है, वही सबसे बड़ा संकट है। इससे बड़ा और कोई संकट नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा संकट है हमारा ऐसा विचार जो गलत विचार है। तो मैं अब ये प्रार्थना की बात मैं समझता हूं, एक बार प्रार्थना में कह देता हूं। I bear witness to my God that thou hast created me to know thee and to worship thee. तुझे जानने अर्थात तेरी शिक्षाओं को जानने और तेरी पूजा करने अर्थात उन शिक्षाओं पर चलने के लिए जन्म हुआ है। I testify at this moment to my powerlessness and to thy might. तू 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया। एक पिता की आज्ञा हुई और पिताजी से रामचंद्र जी बोले कि पिताजी मेरा तो कल्याण कर दिया आपने। मैं तो 14 वर्षों से, जब से जन्म हुआ तब से इसकी कामना करता रहा कि पिताजी कोई आज्ञा तो दे मुझे। आपने सदैव प्यार दिया,
आज तक कोई आज्ञा नहीं दी। आज मुझे पहली बार एक पिता की आज्ञा मिली, और वो भी छोटी सी आज्ञा। 14 वर्ष तो चुटकी बजाते पूरे हो जाएंगे, लेकिन मुझे पिता की आज्ञा मिली। मेरा कितना लाभ हुआ, कितना मेरा भाग्य खुल गया कि पिताश्री ने मुझे आज्ञा दी है। और फिर वन में जाके तो संत महात्माओं के दर्शन का लाभ मिलेगा, ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त करने का लाभ मिलेगा। और जो मैं वहां की जनजातियां जो अत्यंत निर्धन है, गरीबी में अपना जीवन यापन करती हैं, कैसे वो रहते हैं गरीबी में, कितने दुखों में, उनका भी मुझे निकट से ज्ञान होगा। और जब मैं 14 वर्ष के बाद आऊंगा और राजा बनूंगा, तो मैं अच्छा राजा बनूंगा। मैं न्याय करूंगा गरीबों के प्रति, और मैं संत महात्माओं की वाणी सुन के आऊंगा, तो मैं ज्ञानवान बन के आऊंगा। तब मैं राजा बनूंगा, तो मैं अच्छा राजा बनूंगा। तो जब राजा क्या की आज्ञा हुई कि 14 वर्ष के बन चले जाओ, तो ये रहती है बल, आत्मा का बल। राम 14 वर्ष के लिए चले गए, तो ये आत्मा का बल है, प्रभु की राह का बल है। तो I bear witness to my God that thou hast created me to know thee and to worship thee. I testify at this moment to my powerlessness and to thy might, to my poverty and to thy wealth. तू धन धान से पूर्ण है। तेरा धन क्या है? कीलें जो तेरे शरीर में ठोकी गई हैं, वही तेरा धन है। तू जब जाएगा इस संसार से, तो कीलों की पीड़ा लेके जाएगा, धन धान्य से पूर्ण होके जाएगा। धन धान्य से पूर्ण है। To my poverty and thy wealth, there is none other God. तेरे सिर्फ और कोई ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है। None other God but thee, the help in peril, the self-sufficient. संकट में सहायक है और स्वनिर्भर है। तो संकट में क्या है? तो ये सब समझ लें कि संकट एक ही है। कोई भी मन में कभी भी बिना विचार आता है, तो परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमात्मा, इस बुरे विचार को मेरे मन से हटा दो। और परमात्मा सहायता करता है, संकट में सहायक है। यदि हम सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, तो परमात्मा हमारी सहायता जरूर करेगा। मैं इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। यहाँ एक बालक है। ये बालक कह रहा है कि चाइल्ड और यूथ इज द होप एंड प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। यही कल की आशा की किरण है, और ये प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर है, भविष्य का प्रॉमिस है। इस बच्चे के मस्तिष्क में माता पिता और शिक्षक बाल्यावस्था से कौन से विचार डाल रहे हैं, ये सब कॉन्शियस माइंड में उसके चले जाएंगे। अवचेतन मन, एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन। एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में ये अनुभूतियां उसकी स्थापित हो जाएगी, और जैसे जैसे बड़ा होगा, वो कॉन्शियस माइंड में अवचेतन मन से चेतन मन में आने लगेंगी। और जैसे जैसे वो बड़ा होगा, बालक के मन में जो विचार बैठ गए हैं, जो चीजें दो आंखों से देखी है, दो कानों से सुना है, ऑडियो और विजुअल के द्वारा जो अनुभूतियां बालक ने संजोई हैं अपने मन में, जो देखा है, यदि माता पिता को प्रेयर करते देखा है, प्रार्थना करते, तो वो प्रार्थना करेगा।
और प्रार्थना करते नहीं देखा है तो शायद वो प्रार्थना नहीं करेगा। माता पिता में प्रेम से रहना सीखा है तो वो प्रेम करना सीख जाएगा। और यदि आपस में कोई मनमुटाव है तो बच्चा वो भी सीख लेगा। तो बालक का प्रथम विद्यालय, फर्स्ट सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट परिवार है। ये पहला विद्यालय है, पहला क्लासरूम है बच्चे का, ये परिवार। तो ये बच्चे के मस्तिष्क में ये चीजें हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बल्ब है, पावर हाउस से जोड़ दिया तो रोशनी आ गई और तार टूट गया तो अंधेरा आ गया। यहाँ एक बालक है, माता पिता ने और शिक्षकों ने इसे दिव्य लोक से जोड़ दिया। ये परमात्मा का लोक है जहाँ से गीता, त्रिपिटक, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, किताब एकदस, सारी किताबें एक परमात्मा से आई। ये दिव्य लोक है। तो दिव्य लोक से इसको जोड़ दिया बच्चे को। तो बच्चा क्या बनेगा? रैशनल, विचारवान। और क्या बनेगा? वाइज, बुद्धिमान। और क्या बनेगा? गॉडली, ईश्वरीय। और क्या बनेगा? गुड, अच्छा इंसान। और क्या बनेगा? टोटल क्वालिटी पर्सन। और क्या बनेगा? टोटल क्वालिटी मैनेजर। कैसा इंसान बनेगा? लाइक ए डिवाइन एंजल, एक देवदूत की तरह बन जाएगा। ए गुड ह्यूमन बीइंग इज ए ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी। ये ईश्वर का वरदान समाज के लिए बन जाएगा। और कहीं ये तार टूट गया, माता पिता ने बच्चों को नहीं जोड़ा और टीचर ने नहीं जोड़ा बच्चों से दिव्य लोक से, तो ये क्या बनेंगे? इरेशनल, अविचारवान। और क्या बन सकते हैं? अनवाइज, अबुद्धिमान। और क्या बन सकते हैं? अनगॉडली, अनिश्वरीय। और क्या बनेंगे? बैड, बुरे इंसान बन सकते हैं। टोटली मिसगाइडेड पर्सन, टीएमपी, और टोटली मिसगाइडेड मैनेजर, टीएमएम, लाइक ए एनिमल, जानवर की तरह बन सकते हैं। ए बैड ह्यूमन बीइंग इज ए कर्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी, टोटली अनवर्दी एंड अनएक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। ये बच्चे दोनों, इनका गुरु है भौंकता हुआ कुत्ता, और ये एक दूसरे पे भौंक रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, एक दूसरे का जबड़ा पकड़ लिया है और एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं और कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। तो बच्चा या तो ये बनेगा, ऐसा एक ईश्वर का वरदान बन जाएगा, ईश्वर से जोड़ दिया तो, और नहीं जोड़ा तो फिर बच्चा ये भी बन सकता है। तो इसकी बहुत जरूरत है। बच्चे के 3 विद्यालय हैं। क्लासरूम नंबर 1 इज द होम। इस होम में आप देखें तो मम्मी है, पापा है, बेटा है, बेटी है, सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं। द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। वो परिवार जो मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, मिलजुल कर प्रगति करते हैं। अभी घर में गीता भी है, कुरान शरीफ भी है, बाइबल भी है, गुरु ग्रंथ साहब भी है। इस घर के ऊपर परमात्मा का प्रकाश है और सारे दिव्य अवतारों की शिक्षाएं भी हैं और दिव्य अवतारों के फोटो हैं। तो ये घर में सब शिक्षाओं को ज्ञान कराते हैं, गीता का, त्रिपिटक का, बाइबल का, कुरान शरीफ का, गुरु ग्रंथ साहब का, किताब एकदस का। तो इन बच्चों को सब पुस्तकों का ज्ञान कराते हैं। बच्चे का दूसरा क्लासरूम होता है, क्लासरूम नंबर 2 इज द स्कूल और यूनिवर्सिटी। सेकंड इज सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट। स्कूल और यूनिवर्सिटी इज द लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन, spiritual direction, guidance and leadership to students, their parents and the society in general. Let us make every child and youth both good and smart. पहले गुड बनाए, अच्छा इंसान बनाए, तब स्मार्ट बनाए। आजकल की शिक्षा बच्चों को स्मार्ट तो बनाती है, गुड भी बनाए, इसकी बहुत जरूरत है। और गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड। तो बच्चे क्या बनेंगे? एक गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड, मानव जाति के लिए ईश्वर का उपहार बन जाएंगे यदि गुड और स्मार्ट दोनों होंगे तो। और क्या बनेंगे? प्राइड ऑफ द ह्यूमन रेस, पूरी मानव जाति का गौरव बन जाएंगे। और क्या बनेंगे?
ए पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड, इस धरती की रोशनी बन जाएंगे यदि गुड और स्मार्ट दोनों बने, गुड भी बने, अच्छे इंसान भी बने और स्मार्ट भी बने, तो संतुलित बन जाएंगे। इसके लिए नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल परसेप्शन, एलोक्वेंट स्पीच, ये हमारे 4 पिलर्स ऑफ सीएमएस एजुकेशन है और 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एजुकेशन है सीएमएस के। यूनिवर्सल वैल्यूज, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, सर्विस टू द वर्ल्ड एंड एक्सीलेंस इन ऑल थिंग। यहाँ पर एक वर्ल्ड पार्लियामेंट कराई गई, तो वर्ल्ड पार्लियामेंट के जरिए ग्लोबल वैल्यूज, यूनिवर्सल वैल्यूज, जैसे परिवार में एकता हो, उस पर इन्होंने आज वर्ल्ड की पार्लियामेंट करी, तो पारिवारिक एकता बताई गई। इसके अलावा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, सारे वर्ल्ड के प्रतिनिधि बने तो विश्वव्यापी जानकारी उनकी हुई। और सर्विस टू द वर्ल्ड, सारे विश्व की सेवा, विश्व में ये बात कि परिवारों में, सारे संसार में परिवार एक हो और एक्सीलेंस इन ऑल थिंग, हर चीज में एक्सीलेंट हो बच्चे, तो ये है। और नॉलेज उनकी हो, गहरी हो, अंडरस्टूड नॉलेज हो, क्रैम्प्ड अप नॉलेज और मक्ड अप नॉलेज काम नहीं आती, समझा हुआ ज्ञान काम आता है। तो बच्चों को रटा हुआ ज्ञान तोते की तरह, वो जो रटा हुआ ज्ञान है वो बेकार है। और विजडम, ज्ञान का सदुपयोग, विजडम मीन्स प्रॉपर यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज wisely according to the exigency of situation is the wisdom of a man। और तीसरी चीज है स्पिरिचुअल परसिस्टेंस। शरीर तो भौतिक है, हमारी सोच भी भौतिक हो जाए तो आदमी जानवर बन जाएगा, इसलिए शरीर भौतिक है, सोच हमारी आध्यात्मिक हो, तो ये दोनों में संतुलन हो जाएगा। और एलोक्वेंट स्पीच, और इसके लिए तो हम डॉक्टर कल्पना त्रिपाठी जी को और उनके टीचर्स को और खासतौर से बच्चों को बधाई देना चाहते हैं कि महानगर के बच्चे बहुत एलोक्वेंट हैं, बहुत फ्लॉलेस स्पीच है उनकी, फ्लुएंट स्पीच है, बोल्ड स्पीच है, ल्यूसिड स्पीच है, दे आर वेरी एक्सप्रेसिव। बहुत अच्छे से उन्होंने एलोक्वेंटली अपनी बातों को बोला। तो ये एलोक्वेंस ऑफ स्पीच आज के ज़माने में 21st सेंचुरी के लिए नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल परसेप्शन and eloquent speech, universal values, global understanding, service to the world and excellence in all things, ये चीजें बहुत जरूरी हैं for the 21st century education। और तीसरा विद्यालय है बच्चे का समाज, समाज से सीखता है। तो समाज में भी ये सब संत और महात्मा अलग अलग प्रार्थना करते हैं, पता नहीं क्या समाज को बांट रखा है। इतना तो हमारा कहना ये है, बहुत सिंपल बात है कि ईश्वर तो एक है। कोई बता दे कि ईश्वर 2 हैं या 4 हैं या 10 हैं, ईश्वर तो एक ही है। सारी किताबें एक परमात्मा से आई हैं, और जब एक परमात्मा से आई हैं तो सब मिलजुल के प्रार्थना करें। all people should pray together since there is only one God। Law, order and justice are the urgent need of today's society। The basic principles of law, order and justice must be taught compulsorily from early childhood all over the world, and every child must be made law-abiding, orderly and just in their formative age। गांधी जी ने कहा था, if we are to teach the real peace in this world, if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children and youth। नेल्सन मंडेला ने कहा था, education is the most powerful weapon which you can use to change the world। और पॉलो फेरी ने कहा था, education changes the people and people change the world। और विक्टर ह्यूगो ने कहा था, there is one thing stronger than all the armies in the world, and that is an idea whose time has come। Balanced education of all the 3 realities of life, that is material, human and divine, is the idea whose time has come। यहाँ एक बालक है, ये कह रहा है कि I am a material being, I am a human being, I am a divine being, I am a material, human and divine being। सबसे पहले मेटीरियल एजुकेशन, उच्च कोटि का ज्ञान इसे होना चाहिए। अंग्रेजी, भूगोल, गणित, विज्ञान
फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, लैंग्वेज, लिटरेचर, जो भी विषय है, कंप्यूटर साइंस, तो बी एड विद क्लासेस थ्रू हार्ड वर्क एंड टू मेरिट। यहाँ जितने बच्चे हैं उनसे भी मेरा कहना है, ट्राई टू बी एड विद क्लास। हर बच्चे को अपने क्लास में हर विषय में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, हर विषय में टॉप करना चाहिए क्लास में। तो हर बच्चे को बी अहेड विद क्लासेस थ्रू हार्ड वर्क एंड टू मेरिट, कठोर परिश्रम करके और ट्रू मेरिट से क्लास में अव्वल आना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? स्ट्रेन एवरी नर्व to acquire both inner and outer perfections. For the fruit of human tree hath ever been and will ever be perfections, both within and without. It is not desirable that a man be left alone without knowledge or skills, for he is then but a barren tree. Therefore, so much as your capacity and capability allow, you must deck the tree of a being with the fruits such as knowledge, wisdom, स्पिरिचुअल परसेप्शन एंड एलोक्वेंट स्पीच। तो नॉलेज हो, रटा हुआ ज्ञान न हो, समझा हुआ ज्ञान हो। जिन खो जहाँ तिन पाई यहाँ गहरे पानी बैठ, तो आप विषय की गहराई में जाओ और अंडरस्टैंड करो उसको। तो विषय को रटा हुआ नहीं करो। क्रैम्प्ड अप और रटने से आपका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस भी जो आते हैं वो दिमाग के आते हैं। अब ऐसे नहीं कि आप रट के पढ़ लें तो लिख के नंबर आ जाए आपके, नहीं। और टॉप करना है इंडिया में, तो हमारा तो मिशन यही है कि हमारे बच्चे इंडिया में टॉप करें। और टॉप करना है तो फिर आपको ज्ञान होना जरूरी है, नॉलेज हो, डेप्थ ऑफ नॉलेज हो, और उसके बाद में विजडम। नॉलेज के साथ विजडम, प्रॉपर यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज wisely according to the exigency of situation. और knowledge, wisdom, spiritual perception, आपका दृष्टिकोण आध्यात्मिक हो, शरीर भौतिक है, तो जीवन में संतुलन बन जाएगा। और चौथी चीज है एलोक्वेंट स्पीच। आप एलोक्वेंट हो, क्योंकि 21वीं शताब्दी में अब हमारे बच्चे तो सारे वर्ल्ड में जा रहे हैं। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में दाखिला हो रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, 3-3 हजार, 4-4 हजार डॉलर की, 4-4 लाख, 3-3 लाख डॉलर की स्कॉलरशिप लेके बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं इंटरमीडिएट करके। तो ये जो बच्चे जा रहे हैं 3,000, 4,000 डॉलर की स्कॉलरशिप लेके, ये 3 लाख, 4 लाख डॉलर की स्कॉलरशिप लेके, तो ये बहुत बड़े बड़े इंसान बनेंगे। तो ये मैटेरियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। और इसमें हमारी सोच ये है कि CMS एजुकेशन इज प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन एंड यूथ फॉर डिसीजन मेकिंग ग्लोबल कैरियर्स, फॉर डिसीजन मेकिंग ग्लोबल प्रोफेशंस, फॉर डिसीजन मेकिंग ग्लोबल पोजीशन एंड मेकिंग देम लीडर्स ऑफ मैनकाइंड हु कैन यूनाइट द वर्ल्ड एंड मेक इट ए प्लेस वर्थ लिविंग। तो हम लोग डिसीजन मेकिंग ग्लोबल कैरियर्स के लिए तैयार कर रहे हैं बच्चों को। आप देखिए हमारे बहुत सारे बच्चे वर्ल्ड की तमाम यूनिवर्सिटीज में हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जहाँ CMS के बच्चे बहुत बड़ी तादाद में वेल एस्टेब्लिश्ड न हो गए हों। अभी हम एलुमनाई एसोसिएशन की मीटिंग करते हैं, उसमें तमाम बच्चे उसमें ज्वाइन करते हैं। और विदेशों में तो बहुत बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर बच्चे न हों CMS के। तो ये बच्चों को हम लोग चाहते हैं कि कैरियर में जाना है तो ग्लोबल कैरियर में जाना। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल बने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, डॉक्टर बनना है तो वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड जो क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसके डायरेक्टर जनरल बने।
जज बनना है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के चीफ जस्टिस बने। हमारे नागेंद्र सिंह जी चीफ जस्टिस थे वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस के। और अभी हमारे D.R. भंडारी साहब हैं, जज हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो हमें ऊंची बात सोचनी चाहिए, ऊंचा सोचो, ऊंचा सोचो, ऊंचा सोचेंगे अब बनो महान, बनो महान, महान बनेंगे। रोके हैं किसी के भी, रोके से ना रुकेंगे। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। एज यू थिंक सो यू बिकम। ऊंचा सोचोगे तो ऊंचे बनेंगे, साधारण सोचेंगे तो साधारण बनेंगे, और नीचा सोचेंगे तो नीचे बनेंगे। जैसी हमारी सोच होगी वैसा बनेंगे। तो बच्चों की सोच को ऊंचा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर मटेरियल एजुकेशन, फिर ह्यूमन एजुकेशन, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे को घर में ही पाठ मिलना चाहिए। दादा दादी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें, माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें, बड़े भाई बहन को सम्मान दें, छोटे भाई बहन से प्यार करें। तो ये कौन सिखाएगा? मोहल्ले के कॉरपोरेटर या MLA साहब सिखाने नहीं आएंगे। ये माता पिता को सिखानी है बात कि दादा दादी के चरण स्पर्श करें, माता पिता के चरण स्पर्श करें, माता के काम में हाथ बटाएं, और पढ़ाई में भी कोई कमी ना आने दें। पढ़ाई लिखाई भी करें लेकिन माता पिता के काम में हाथ बटाएं। तो ये बात बच्चों को मानवीय शिक्षा, ह्यूमन एजुकेशन बचपन से मिलनी चाहिए, ताकि बच्चा बड़े होकर के इस विश्व में, तो वन डे आई विल यूनाइट द वर्ल्ड with the help of balanced education of all the three realities of life, that is material, human and divine. तो एक दिन दुनिया एक करूंगा, धरती स्वर्ग बनाऊंगा, और विश्व शांति का सपना एक दिन सच करके दिखलाऊंगा। One day I will unite the world, make it a nice place worth living. तो ये बच्चे में यह है। तीसरी चीज है डिवाइन एजुकेशन, डिविनिटी की शिक्षा, दिव्य ज्ञान परमात्मा का होना जरूरी है। यहाँ एक बालक है, टोटल क्वालिटी पर्सन और टोटल क्वालिटी मैनेजर बनना चाहता है, ताकि बड़े होकर इस धरती पर डिवाइन सिविलाइजेशन स्थापित करे। तो इस दिव्य लोक से अपने आप को ये जोड़ रहा है। तो इसमें 5000 वर्ष पूर्व वहीं से गीता आई है, 2500 वर्ष पूर्व वहीं से त्रिपिटक बुद्ध की आत्मा में आया, ये गीता कृष्ण की आत्मा में आई, और 2000 वर्ष पूर्व बाइबिल यीशु मसीह की आत्मा में वहीं से आई, और 1400 वर्ष पूर्व होली कुरान शरीफ वहीं से एक परमात्मा से ये इसके मोहम्मद साहब की आत्मा में आई। और ये 550 गलत है, 500 लिख लीजिएगा। तो 500 वर्ष पूर्व गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान इसी परमात्मा से आया, जहाँ से गीता, कुरान और बाइबिल आई है। और 200 वर्ष पूर्व किताब अक़दस ये बहाउल्लाह की आत्मा में आई। उनकी तस्वीर नहीं है, इसलिए उनके बेटे अब्दुल बहा की तस्वीर लगाई है, जो इंटरप्रेटर थे अपने पिता की शिक्षाओं की, जिसमें यूनिटी ऑफ हार्ट्स है। और बहाउल्लाह ने 3 बातें कही हैं। द बेसिक पर्पज ऑफ ऑल द रिलीजन इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेस एंड टू फॉस्टर द स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप ऑफ मैन। दूसरी बात जो बहाउल्लाह ने कही वो ये है कि progressive revelation means religious truth is revealed by God progressively and cyclically over a time through a series of divine teachers, and the teachings are tailored to suit the needs of different ages and places of their appearance. तीसरी बात उन्होंने जो कही वो है all the revealed books of God are unerring. इनमें कोई त्रुटि नहीं है। जितनी किताबें हैं all the revealed books of God are unerring and collected wisdom. ये संग्रहित बुद्धिमत्ता है। परमात्मा ने सारी बुद्धिमत्ता को संग्रहित करके, कलेक्ट करके इनमें रख दिया है। तो all the revealed books of God are unerring and collected wisdom that are sent by one God. एक ईश्वर ने भेजी है, as required from age to age, युग युग की आवश्यकताओं के अनुसार, to open the mental locks of mankind and to cure the maladies of the age.
युग युग के दुखों को दूर करने के लिए ये दिव्य ज्ञान आए और बच्चे में मैटीरियल, ह्यूमन और डिवाइन तीनों तरह की एजुकेशन दे, बच्चे को गुड एंड स्मार्ट बनाए। तो क्या बनेगा? प्राइड ऑफ ह्यूमन रेस बनेगा, गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड बनेगा, पोटेंशियल लाइट ऑफ द वर्ल्ड बनेगा। बच्चे को गॉड इज वन, रिलीजन इज वन, मैनकाइंड इज वन। इसके अलावा नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल परसेप्शन, एलोक्वेंट स्पीच, यूनिवर्सल वैल्यूज, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, सर्विस टू द वर्ल्ड एंड एक्सीलेंस इन ऑल थिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चे का पैदा करें, लीडरशिप स्किल पैदा करें, फुल कमिटमेंट एंड टोटल इन्वॉल्वमेंट के लिए बच्चे को तैयार करें, पूरे मनोयोग से अपनी पढ़ाई करे या जो भी काम करे पूरा दिल लगा के करे। और इसके अलावा हर बच्चे को अजाइल और एक्टिव बनाए और फार साइटेड और विजनरी बनाए, दूरदृष्टि वाला और सपने लेने वाला। और गोल सेटिंग कॉम्पिटेंसीज, अल्टीमेट गोल, लॉन्ग रन गोल, इमीडिएट गोल, गोल एट हैंड एंड तो ये जो गोल्स हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो गोल सेटिंग कॉम्पिटेंसीज, humble and tolerant बनाए, humility exalteth man to the heaven of glory and power, while pride abaseth him to the depth of wretchedness and degradation. Tolerance भी सिखाएं बच्चे को, God will increase the reward of them that endure with patience in the path of God. If anyone revile you or trouble at you, be patient and put your trust in him who heareth and who seeth. Self-discipline बनाए, emotionally stable बनाए, noble and law-abiding बनाए, consultation सिखाएं, in place of discussion, arguments, strong will power, बड़े काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करें, लॉजिकल टेम्परामेंट, क्यूरियस एंड इमेजिनेटिव बनाए, ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट बनाए। इन शब्दों के साथ मैं डॉक्टर कल्पना त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात पेरेंट्स तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इस ब्रांच को बहुत ऊंचा बनाया है, पढ़ाई लिखाई में, रिजल्ट में, हर चीज़ में सारी उपलब्धियाँ यहाँ के बच्चों की होती हैं। सबसे ज़्यादा उपलब्धि यहाँ के बच्चों की हो रही हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। Thank you, sir, for your valuable thoughts and words. Sir has always been a very strong wind underneath our wings. We soar high and reach the zenith of success if our children are really doing very well. It is solely because of his ideology, values, philosophies, motivation and belief. His simplicity and zeal to safeguard the future of 2 billion children of the world. It's exemplary, ladies and gentlemen. Thank you, sir, for always being there with us, blessing us, guiding us, holding our hands, and at the same time supporting us and standing with us wherever we go wrong. Thank you so much. Children have a world of wonder, a world which is unique, a world which is quite different from ours. It is magical, full of love, full of joy, and they love to be in that world. They love to stay, to grow in that world. It's with that belief and with that innocence in their eyes, in their heart, that they see our world. The world which is very, very different from theirs. Coming up next is a beautiful, dramatic presentation wherein these small children will hold our hands and very quietly, very nicely, very joyfully will take us into their own world, the world of wonder, the world of magic. And now I invite
Tasmiya, Ananya Manar, and Rudraksh Veer Singh to introduce this program and to hold our hands and take us quietly into their magical world. Over to the children. Stage is all set, and you can see the children are all standing here, and I believe they are just waiting for a cue. And ladies and gentlemen, that cue I believe is the motivation from your side. Can we put our hands together this time to welcome them? Dear audience, watch with glittering eyes the whole world around you, because the greatest secrets are always hidden in the most unlikely places. Those who don't believe in magic will never find it. But remember, a little magic can take you a long way. So now, we present before you a musical drama, My Dream, Our Dream, which has been adapted from a very famous story of Roald Dahl, The Big Friendly Giant. The story starts with the children engaged in their daily routines and the big friendly giant watching them. I think you're wonderful when somebody says that to me. I feel wonderful as wonderful can be. It makes me wanna say there's something to somebody new. And suddenly I begin to say, I think you're wonderful too. And suddenly I begin to say, I think you're wonderful too. I think you're wonderful too. The sun has set, and it's time for the children to get some rest and dream. But this is also the time when the big friendly giant goes on his prowl. The big friendly giant is now going to sprinkle the magical powder of good dreams
want to sing. Let me go with anything. Oh, somebody's knocking at the door. I will go and check.
Planet Earth, my home, my place, a capricious anomaly in the sea of space. Planet Earth, are you just floating by a cloud of dust? Do you care? Have you a part in the deepest emotions of my own heart? Tender with breezes, caressing and home, alive with music, haunting my soul. Planet Earth, gentle and blue, with all my heart. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure? What have we done to the world? Look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flower fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children that were born? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure? I used to dream, used to glance beyond stars. Now I don't know if love, although I know it's written in my heart. Stephen truly was a class apart, ladies and gentlemen. And children, you made it happen. You created magic on stage, phenomenal, and a very, very proud accomplishment. Can we clap very, very loudly for these wonder kids? It was such a beautiful presentation. Perfect blend of melody and magic, mastery, which led the entire presentation and which has made the entire presentation memorable. Well done. A mother's love is the fuel that enables a normal human being to do the impossible. An integral part of every family, a mother is. She unites, minds, plans, executes, and works selflessly for all the members of the family. A mother is she who can take the place of all others, but whose place no one else ever can take. We are very fortunate to have a group of mothers who are all set to come together to showcase their skill in a melodious way. Ladies and gentlemen, this is a group of
mothers. The count itself gives an idea. What support, what preparation, and what commitment they have. As they take their place, ladies and gentlemen, and the audience seated the other side, may we please put our hands together for this very bright, enthusiastic group of mothers.
louder round of applause, dear audience, louder for their commitment, devotion, preparation and performance. Dear audience, we are very honored to have amidst us our very dear Badi Didi, founder, director, respected Dr. Mrs. Bharati Gandhi ma'am. Let us welcome her very warmly by putting our hands together for ma'am. We welcome you, ma'am. Here comes a small token of gratitude for each one of these wonderful mothers. Lovely presentation, and we are really very honored to have them here. And here we shall have a group photograph with our respected founder director ma'am, as we popularly, lovingly call her Badi Didi. And dear parents, she is the mother of CMS family, the CMS clan. So our mother, with all the mothers who have assembled here to be a part of this program. Dear audience, this is a group of, as I announced earlier, it's a group of 153 mothers, and it's not a small feat, so a lot of motivation is required from your end, audience. Come on. It's not a small job, because it's not today but for so many days in a line. They did take out time from their valuable schedule to come for the practices. They would finish their day's work and thereafter come over to our campus to practice, and it's after a lot of hard work, a lot of practice, that they were able to put up the presentation here. So their commitment, their sincerity, their performance, their devotion, everything is exemplary. And it's because of this that children are exemplary. It's because of this that a branch is exemplary. Thank you so much, dear mothers. And as the mothers go down and they step down and they take their place in the auditorium, let me introduce the next item we are to put up on stage. When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when funds are low and the debts are high, you want to smile but you have to sigh. When care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Coming up next is an immensely motivational presentation. It's all about the fact that hurdles
Obstacles and problems have always been a part of life. But if every hurdle, every obstacle is just turned around and converted into an opportunity, there is no stopping to success. Great leaders are great because they turn every challenge into opportunity. How? Let us watch and see for ourselves. So over to the children. I request mothers to please settle down quickly. I put my arm around, show you how strong I am. I put my arm around, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Figure it out for yourself. You're all being the greatest of men. Have had 2 arms, 2 hands, 2 legs, 2 eyes, and a brain you use if you would be wise. With this equipment, they all began. So start from the top and say, I can. Look them over, they're wise and great. They take their food from a common plate, and similar knife and fork they use. With similar laces, they tie their shoes. The world consider them brave and smart, but you have all they had when they made their start. Courage must come from the soul. Then a man must first have will to win. So figure it out for yourself. My lad, you're all born to the great have had. With your equipment, they all began. Get hold of yourself and say, I can.
Jijabai adored her little son from the moment he was put into her arms. He became the apple of her eye. His father worked for the invaders and was always away from his family. So it was Jijabai who brought up her son. She handed over her son to Dadaji Konde, who became his teacher guardian and guru. I hand over my son to you. You become his teacher guardian and train him to become a brave soldier. Yes, I will train these young lads to embrace freedom and to keep their motherland free from invaders. Dadaji Konde became Shivaji's guardian teacher. He taught the lads to ride white horses and shoot guns. He made him bathe in cold water of the river and sleep in the open. In 1645, young Shiva took a ceremonial pledge to free the country from foreign rule. Dear Shiva, it pains me that many of our Maratha people, like your father, are working for these invaders in our own motherland. I dream of an independent Maratha kingdom. One day when we will no longer be the slave to these invaders. My son, you must be disciplined, brave, and have a strong sense of duty to your motherland. You have a destiny to fulfill. Be victorious! Yes, I will free my country from these invaders and make my motherland proud. Har Har Mahadev! Do not think of the enemy as weak. Then do not be too scared to feel too strong. When you are enthusiastic, the mountain also looks like a clay pile. Self-confidence provides strength and power imparts knowledge. Knowledge provides stability and stability leads to victory. Shivaji has personified the values given by Mother Jijabai and teacher guardian Dadaji Konde. As Jijabai cultivated a sense of broadness in Shivaji, similarly, each mother should contribute in the foundation of a strong nation.
others is a life worthwhile. The only reason for time is so that everything doesn't happen at once. The true sign of intelligence is not knowledge but imagination. We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. I have no special talent. I am only passionately curious. Only a life lived for others is a life worthwhile. People, don't instruct me. I abide by reasons only. What sets you apart can sometimes feel like a burden, but it is not. A lot of the times, it is what makes you great. In order to be irreplaceable, one must always be different, and different was Albert. Albert Einstein has influenced many young minds like me to never give up in the face of difficulties. He taught us to be curious forever. He proved that true sign of intelligence is not knowledge but imagination. Albert, what are you doing? I am disappointed in you, Albert. You don't fit the standards of an ideal student. You are always in your thoughts and imagination and never listen to the instruction. I can't obey the commands like a soldier. That is why you are not fit to attend this institution anymore. It wasn't that Albert didn't want to learn and succeed like other boys. He just happened to be more interested in searching facts and figures. What happened, Albert? Look what I received from the principal. I don't like being forced to do things. You are not like other boys, Albert, and you will probably be not like other men. But it doesn't mean that you are a disappointment. It just means that you are destined to do things on your own. A person who never made a mistake never tried anything new. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage that continues to count. When no one believes in you,
In line with the promise of this age, I want to exhort each of the graduates here to take on an issue, a complex problem, a deep inequity, and become a specialist on it. If you make it the focus of your career, that would be phenomenal. But you don't have to do that to make an impact. For a few hours every week, you can use the growing power of the internet to get informed, find others with the same interests, see the barriers, and find ways to cut through them. Don't let complexity stop you. Be activists. Take on big inequities. I feel sure it will be one of the great experiences of your lives. I love speed. That too. Speed of thoughts. That is why I embrace technology. When I think of speed, computer comes in my mind. And so come Bill Gates. Technology, technology, technology can make life simple. Using science to invent new things. Who is also known as William Henry Gates III, widely regarded as the inventor of computer. The world's largest computer software company, Microsoft, was co-founded by him. With all his discoveries and creative approach on seeing the application of computer in every sphere of life, he has made the computer into a household product. Don't compare yourself with anyone else. If you do so, you are insulting yourself. My journey from a student to an entrepreneur was not easy. I was competitive in everything I did. My inclination was towards maths, but there were several 89,56,000. hurdles that I had to overcome. 89,56,589 multiplied by 18. Oh yes, I got the answer. Bill Gates, what are you doing? Be quiet. Be quiet. I'm teaching you about circuit and you are busy with the calculator. You are only fit for the clinical jobs. Leave my class now. It was last year Bill Gates at Harvard University. His parents decided to send him lakeside school. The school changed his life as principal purchased time on computer thinking. The students will learn something new. Paul, have you ever thought how can we make calculation easy, fast and simple? Yes, I have some idea to take calculator to the next level. Oh wow, I also have few. So let's work on it together. Bill and Paul worked very hard and wrote their first computer program, a version of tic-tac-toe. And so with this, he started his journey on the way of becoming a successful billionaire. Rightly said by Bill Gates.
Excuse me, please. Yes? Where is this platform number? 93 quarters? It's so funny. We don't have such a platform. Oh, here it is. I love my books as it helps me to create my own picture of that piece of information. Let me introduce my celebrated author, J.K. Rowling. You must have enjoyed the scene. Were you able to recognize the famous character? Yes, you guessed it right. It's Harry Potter. This one word opens an entire world of magic before us. It takes us back to the magical world of Hogwarts, the school of wizards, and its three musketeers. How could anyone think like that and make people believe it? No one else except my author who created the niche of her own, J.K. Rowling. Joanne was greatly inspired by her mother and loved reading. And more than that, she loved reading stories to her children. It's just been the through line through so much of my life. And so when I look at back at the books, I can remember where I was when I wrote all these 17 years I spent with those characters. I was in a very precarious situation. For a few years, I was probably as poor as you can go without being homeless in the UK, which is not to say that friends and family didn't help me, because they did. But, you know, it was tough. I was working part-time. The law at that time was you could earn up to a very small amount a week without forfeiting housing benefit, which was the thing that was keeping us homed. So I worked up to that amount. I had a clerical job in a church at one point. So and then I was teaching, but we were still existing partly on benefits. I couldn't wholly support us. And then the miracle happened. Harry was published, and we really didn't look back. Children, come on, it's getting late. But before you're off to sleep, it is your bedtime story. Yes, bedtime story time. Once upon a time, in our jungle, Rowling made her first attempt by writing a short story titled Rabbit. A point to note here is that her neighbor was a family by the surname of Potter, and she liked this surname very much. Can you please publish my script? I don't fight anything substantial. Sorry. Please. No. Can you please publish my script?
Congratulations! I like the script very much and I will publish it. Thank you so much. And the rest is history. We do not need any magic to change the world. We carry all the power we need inside ourselves. We have the power to imagine better. Essa bola vai rolar, mundo é um tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá. La 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 la. I dare you. Let go. Let go. Let go. Feel how the planets become one. It's like a drum to death and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle, and we all will play like we dance. Only today, there's no tomorrow. Leave all behind in this place. There's no space for fear or sorrow. My mind lurks in the memory of an empty field and a goal that I have to achieve, a date that proved to be, a turning point arrived, a sideways life of inspiration was my desire to achieve my goals. Cristiano Ronaldo, the Santos Aveiro. Put your flags up in the sky. And never sad, 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 sad. Show the world where you're from. Show the world we are one. Popularly known as Cristiano Ronaldo, was born on 5th February 1985. His father, Jose, was a gardener and Mother Maria was a cook and a cleaner. Ronaldo is the fourth and youngest among his siblings. He, being an unexpected child of the family, became a shining star whose popularity is well renowned. Before the glory, before the money, before the goals and the trophies, I endured struggles that you can't even imagine. I grew up with nothing. We were very poor. I didn't get toys on Christmas. Why can't we celebrate Christmas like other families? At age 11, his life took a decisive turn. His talent caught the eyes of the best scouts from his favorite club, Sporting Lisbon. That was a great play. I love your spirit on the field. Congratulations! You have been selected for a Lisbon team. Waiting to see you at the next match. He stayed determined to succeed and work hard. You're not the best when you believe you are, but when
hard work started paying off. He was diagnosed with tachycardia. In this condition, you may not be able to play football ever again, but we can try for this procedure. Oh, you gave me a ray of hope. Thank you so much. Once again, Cristiano Ronaldo overcame an obstacle placed in his way. What happens next? Hundreds of goals, dozens of trophies. Cristiano Ronaldo became a living legend. He is the perfect example. You should never give up. Look who we are the dreamers. Don't let small obstacles be in the way of being victorious. Remember, you are stronger than the challenges you face. I met her first in one of my school functions. She came down from the stage and started interacting with us. I found her soft and welcoming. Dear parents and teachers, I am talking about the mother figure and founder director of this renowned institution, Dr. Mrs. Bharti Gandhi. She ardently believes in the ideology of Vasudhaiva
as an assistant psychologist, Regional Psychological Center. She was awarded the Devi Award for unparalleled contribution to women education. She married to Sri Jagdish Gandhi on 15th January. They started City Montessori School with 5 children on July 1st, 1959. Good morning, children. How are you all? Please sit down. Dear children, usually we greet each other by saying good morning. But today I am going to introduce you to new words. Jai Jagat. Yes, Jai Jagat. It means to hail the world and to pray for the good of the whole world. Children, with this word, we will connect with the world. Dear children, please write Jai Jagat on your slates. The same time should take care of our own children. Very good. Dear parents and teachers, not only she has changed the scenario of education in the city of Nawabs, but also nurtured her own children as game changer. Let's meet them. Mrs. Geeta Gandhi, an alumna of Oxford University and London School of Economics. Professor Geeta Gandhi is the chair of Education Economics and International Development of University College London. At present, she is the President and MD of City Montessori School, Lucknow. Mrs. Sunita Gandhi, apart from being the President Council for Global Education, she is the notable humanist who served national and international interest by introducing new methods and ideas, concepts to bring a progressive change in education. She is the program leader of ALPHA, that is, Accelerating Learning for All. Mrs. Neeta Gandhi. She is a physician scientist and program leader for Nutritional Epidemiology program at University of Cambridge. Mr. Vinay Gandhi. He is an engineer graduate who from the University of London and her children joined her in this noble
Think first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master on my sea. Oh, ooh, the master on my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soul into the mass. It was on my own once for the few that look at me, took me, sugar me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. You make me up, you make me a believer, believer. From the early dawn to the dusky evening was the constant hard work and my mother's encouragement that helped me to overcome all hurdles. Anything is possible if you have got enough nerve. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. If you don't believe you are the best, then you will never achieve all that you're capable of. Power does not come from knowledge kept, but it comes from knowledge shared. And investment in knowledge pays the best interest. We are a competition. Who can be the one? Thank you. Excellent performance, excellent presentation. Failure is a stepping stone to success. But ladies and gentlemen, very beautifully they have given us the message that success is always within our reach. So many lessons. So many lessons we've taken down today from the world of possibilities which they had put up. Lessons from Chhatrapati Shivaji, Albert Einstein, Bill Gates, Rowling, Ronaldo, and our respected founder director man, and each gives the same message. Life is tough, but we are tougher, and obstacles should be turned into opportunities and problems always into possibilities. At this note, as the stage is being set for Kavali, I invite our respected founder director, ma'am, to propose vote of thanks. Over to ma'am. माय डियर पेरेंट्स, आपके जाने का टाइम हो रहा है और मैं आपको एक शेर सुनाना चाहती हूँ। आपकी ऑनरेबल सीनियर प्रिंसिपल्स मैडम डॉक्टर, ये बंद कर दो इसे प्लीज, कल्पना त्रिपाठी जी और उनकी तीनों बिल्डिंग्स की मोस्ट रिस्पेक्टेड मिडिल लेवल हेड्स
अपने CMS में, जिसमें कि पेरेंट्स पूरा सहयोग ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि बच्चों को एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके लिए मैंने आपकी प्रिंसिपल को बहुत सराहना की है, बहुत सराहना की है उनकी, कि जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स पेड़ है जिन पर कि ये मीठे मीठे फल आपके जो बच्चे हैं, जो इतना अच्छा स्टेज पे प्रोग्राम दे रहे हैं, वो आपके पेड़ के फल हैं। मैं आपको बधाई देती हूँ। शेर ये है, ऑनरेबल कल्पना त्रिपाठी जी के हुजूर में नजर नजर में उतरना कमाल नहीं, नफस नफस में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। जब लीडर को कह दिया तो सबको कह दिया। अब ये सोच लीजिए, A to Z संस्था के जितने भी वर्कर हैं वो कमाल के हैं। अंतिम बात मुझे ये कहनी है, क्योंकि मेरे पास शायद 1 ही मिनट का समय बचा है, वो ये है, आप पेरेंट्स हैं, हाँ जी, तो आपको एक मंत्र मैं देती हूं। ये कच्चे बच्चे कौन बोल रहे हैं? मंत्र दिया जा रहा है और ये बच्चे आपको दे रहे हैं। बच्चों की प्रार्थना है, मैं साक्षी देता हूं हे मेरे परमात्मा कि तुझे पहचानने और तेरी पूजा के लिए ही तूने मुझे उत्पन्न किया है। बच्चों से सवाल पूछा जाता है, मतलब क्या है इसका? आपको भी जवाब देना है माता पिता, क्योंकि आपने देखा जो माता पिता सिखाते हैं वैसे बच्चे बनते हैं। तो आपको ये प्रेयर आज सीख के ही जाना है, और वो भी 1 मिनट में, शायद 40 ही सेकंड में। वो प्रेयर है, ए चक्कर पकड़, इधर हो रही है, मम्मी जी करा रही हैं। सेकंड रह गए। साक्षी देता हूं कि तुझे पहचानने के लिए पैदा किया है और तुझे तेरी पूजा करने के लिए पैदा किया है। ये बच्चे रोज प्रेयर करते हैं, तो कैसे पहचानेंगे ईश्वर को? नंबर 1 क्वेश्चन, जो भी टीचर इसका सही जवाब देती है उसे 50 रुपए मिलते हैं। आप पेरेंट्स भी गिन लीजिए कितने हैं जो सही जवाब देंगे। नंबर 1 क्वेश्चन का, तुझे पहचानने के लिए उत्पन्न किया मुझे, कैसे पहचानेंगे परमात्मा को? मैं जवाब बता देती हूं क्योंकि आपका सुनने का टाइम नहीं है। निराकार को तो हम देख नहीं सकते, तो हम साकार ईश्वर को मानते हैं। तो ईश्वर के अवतार को पहचानना ही प्रभु को पहचानना है। रट लिया आपने? यही बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि हम और आप अगर फैसला नहीं करेंगे ये ठीक बात है तो बच्चे बेचारे क्या करेंगे?
टीचर का माने कि ना माने, इनका माने, माता माता का माने कि ना माने, तो एक ही भाषा बोलनी है। हे मेरे परमात्मा, तुझे मुझे पहचानना है कैसे? भगवान तो निराकार है, उसे तो देखा नहीं, तेरे मैनिफेस्टेशन को देख करके, तेरे भेजे हुए अवतार को जान करके ही मैं परमात्मा को पहचान सकता हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया आधा। दूसरा क्या है? पूजा। किस लिए उत्पन्न किया है? तेरी पूजा करने के लिए उत्पन्न किया है। पूजा किसकी करनी है? भगवान की। कौन सा भगवान? जो हिंदुओं के लिए राम है, इस्लाम वालों के लिए मोहम्मद साहब हैं। वेरी गुड, थैंक यू। तो उन्हें पहचानना है। ये तो पहचान लिया, नंबर 1 के उत्तर में आ गया। अब आता है कि तेरी पूजा कैसे करूं? जब माँ की बच्चा पूजा करता है तो उसका कहना मानता है। माँ ने कहा देख गिल्ली डंडा रास्ते में नहीं खेलना, स्कूल छुट्टी हुई सीधे घर आना, तो वो नहीं खेलेगा गिल्ली डंडा रास्ते में, सीधे घर आएगा। मेरी माँ इंतजार कर रही है, भूखी बैठी है, मुझे घर जाना घर जाना घर जाना। ठीक है, तो माँ की पूजा करने का मतलब है माता का क्या करना? हाँ, जल्दी तेजी से बोला करिए। माता, हाँ, वेरी गुड, थैंक यू, यू डिजर्व ए प्राइज। तो माता का कहना मानना माने माता की पूजा करना। तो ईश्वर की पूजा करने का मतलब है कि जो उनके अवतार हैं उनका कहना मानना। तो दिक्कत ये है वो दिखते नहीं, माता दिखती है। कोई बात नहीं, चित्र देख लीजिए। उनका कहना कहाँ लिखा है? रामचंद्र जी का या कृष्ण भगवान का कहना कहाँ लिखा है? जो बताएगा 500 रुपए मिलेंगे। गीता, वेरी गुड, भाग के आ जाओ, 500 ले जाओ। उन्होंने कहा भगवान कृष्ण का कहना कहाँ लिखा है? गीता। बच्चे ने बुलाया, ठीक है। तो गीता को बच्चे को दिखाना भी है, पढ़ाना भी है, क्योंकि वही कहना मानना है। बस मेरा सवाल खत्म हो गया, जवाब भी आ गया। भगवान को कैसे जानना है? उसके मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड के जरिए। और उनकी पूजा कैसे करना है? वेरी गुड। उनका पूजा जिसकी करते हैं उसका हम कहना मानते हैं। ठीक है, वो टुन की तरह नहीं जो करवा चौथ का व्रत रखा तो अपने हस्बैंड को खूब डांटा, खूब परेशान किया। ऐसे नहीं होता है, कहना मानना। ठीक है, तो नंबर 1 भगवान को जानना कैसे? अवतार के द्वारा। सही? यस नो? दूसरा सवाल, पूजा करना माने कहना मानना, और कहना का आज्ञा मानना। वेरी गुड, तुम्हें भी 500 मिलेंगे, भाग के आओ। और कहना कहाँ लिखा है? हाँ, किताब देखिए, भगवत गीता देखो, कुरान शरीफ देखो, और वो उसमें क्या लिखा है कि लड्डू खाओ काम मत करो। यही लिखा है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है, पता करो, पढ़ो, पता लगाओ। धन्यवाद। जय जगत। वो दो बच्चे आ जाए, 500 ले। Also gets rupees 500, as he said that we should always obey. So congratulations children, thank you Didi. Please start. बदकिस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों के लिए कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। Behind every child who believes in himself is a parent who believed first. Good afternoon and Jai
Jai Jagat to one and all present here. Parents are the most precious gift of God for us. They are an incarnation of God on earth. Parents are our first teacher. They give unconditional love and support. They lead us in right direction and are the pillars behind our success. Hence, it's our duty to respect and obey them and take good care of them even when they grow old. So let us express our gratitude through Kavali. आज की नौजवान पीढ़ी से हमारी प्रार्थना है, अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बनाएं, अपने माता पिता का दिल ना दुखाएं, ना दुखाएं। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। मेरे मालिक मेरे आका मेरे मौला ने कहा, मेरे मालिक मेरे आका मेरे मौला ने कहा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत क्या है, बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। ये है राजी तो नबी राजी है, राजी है खुदा, ये है राजी तो नबी राजी है, राजी है खुदा, ये है राजी
the best parents. Thank you, ma'am. The presentation, dear parents, was absolutely heartwarming each time it is presented. The words reach our heart and they go down to the soul. Thank you so much, children, for your appeal by the way of Kavali. It has strongly touched our heart. A tribute to you, dear parents, was very well delivered. Thank you so much. And now, the last item on my list is the grand finale, Joy to the World. Christmas, ladies and gentlemen, is not a season but a feeling. Feeling of joy and celebrations. Christmas is the spirit of giving and forgiving without the thought of getting. 25th December is just round the corner, and we don't wish to miss the festivities and celebrations. Christmas is in the hearts, in the air. Let's feel the Christmas vibes then. Over to Mr. Sanjay Charles for celebrations of Christmas, the grand finale, Joy to the World to unfold. To miss the festivities. I think sir will take 2 minutes as the children are taking their position there on the stage. At this point, I wish to personally thank all the dear parents, all the dear mothers, all the grandparents for the wonderful support you've extended, for your patience, for the wonderful time that you gave us today. And you've been really very, very patient, very, very cordial, very sincere, truly dedicated to the growth of your children. Thank you so much, dear parents, for all your cooperation and support. As I already declared, this is the last item, the grand finale, in celebration of Christmas. The story of Christmas is the story of God's love for mankind. God wants us to be always happy and peaceful. Christmas is the season of rejoicing over the birth of Jesus Christ. Jesus is the center of all the celebration. As the entire world today is celebrating Christmas on 25th December, sharing lots of love, happiness amongst the people. 2,000 years before, in a small town in Nazareth,
in the country of Israel, God sent his angel Gabriel to a woman named Mary. The angel appeared and said to Mary, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God, and you are going to give birth to a child, and you name him Jesus." And after saying this, the angel Gabriel left. And at the same time, there were some shepherds who were looking at their flocks by night in a cold and dark night. And then again the angel appeared to them with good news. He said, "Behold, Lord, I have bring you a good news to you." The angel said, "Do not be afraid. There is a news of a great joy. A baby is born in Bethlehem. Just go there and worship him." After saying this, the angel left. Shepherds went to Bethlehem to worship Jesus Christ. And then at the same time, there were wise men. They saw a strange star in the east, and they studied about the star. And they found that according to this star, a king is born. They were overjoyed, and they followed the star in the east. They reached Bethlehem and found baby Jesus was born in a stable, wrapped in swaddling clothes, and was laid in a manger. And the first wise man, he offered gold. And then the second wise man, he came with a gift of frankincense. And the third wise man, he came with a gift of myrrh. So one by one, they all worship Jesus, and they all enjoyed. And then the choir sing a song, "Come on, ring those bells, light a Christmas tree." Come on, everybody, come on, sing with us. Everybody likes to take a holiday. Everybody likes to take a rest. Spending time together with the family, sharing lots of loving happiness. Everybody likes to take a holiday. Everybody likes to take a rest. Spending time together with the family, sharing lots of loving happiness. Ring the bell, plant the tree. Jesus is the King, born to be my King. Ring the bell, never sing. Jesus, remember it's a birthday. Here comes the Santa, and we're waiting for him, and he will be coming. Come on, give a big hand to Santa. Dashing through the
ride. What fun it is to ride a sing song tonight. Hey, jingle bell, jingle, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, dashing through the snow in a one horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells and throttle rain, making spirit bright. What fun it is to ride in sing song tonight. Hey, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. Hey, dashing through the snow, one horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Nothing but the rain, making spirit bright. What fun it is to ride and sing song tonight. Hey. We wish you a Merry Christmas and a very Happy New Year. So may your heart and home be filled with all the joys of the world. Merry Christmas and a wonderful New Year, ladies and gentlemen, dear children. And with this, we conclude the function. Thank you so much for gracing the occasion, for giving us your valuable time. And I request everybody to just stay back for one more minute. We'll have the national anthem. I request all dear parents to please stand for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you and Jai Jagat.